Yeah, hi guys. We'll wait for a few more minutes and then we'll start. You can meanwhile think of any questions that you have so that you can ask me. Okay. As usually, we'll be having 1 hour of discussion. Okay. Regarding the questions or the homework questions or any general doubts, and then for the 2 hours we'll be going for the class. Okay. Yeah, sure. Fine. Anagrams देखेंगे. Yeah, थोड़ी देर रुक जाना. Let more people join the class. Then I'll unmute you. Then the discussion will be more fruitful, is what I'm thinking. I'll unmute you. Don't worry.
Yeah, why people didn't join, guys? Are you guys aware that the class is from 8 o'clock, right? Only 140 students have joined. Like, is there any other thing that? अच्छा यार, पोर्टल वाला इश्यू काफी लोग रेज कर रहे हैं. ठीक है, तो गाइस जस्ट पिंग द class, I mean class ka link in the chat box or in the Discord channel, wherever you guys. Yeah, Tusha, thanks. So just circulate it. I think it will be helping few people. Okay. So today we'll be discussing pretty much about we'll be discussing about hashing. Okay. So we'll be closing the hashing. Okay. So it's a very good question which I wanted to teach you guys, uh, but it will so if you guys are fluent with linked list, then only I want to touch that question, or else I am ready to skip that question. So what do you guys are you guys familiar with linked list, guys? Hello? कितना familiar मतलब familiar मतलब good या what? Yeah, I'll unmute just a second, bro. Wait. So are you guys good with linked list? Yes. Okay. So let's see. Okay, I'll give you a question. Okay, we can have a discussion on that question. Okay, it's fine if you're not understanding it. If you're not fine, so it will come into uh, a medium to hard level question, okay, which I wanted to do out of the syllabus, okay, but I think it will help you understand hashing in a very much better way, right? So we'll do that, okay. And we'll be starting the techniques like prefix sum, and a prefix sum is a very good technique which you guys need to know. You already have been using that in the questions like this, okay, but you'll be will be formally introducing that, okay. Yeah, sure. So I think we should get started. Uh, Somasundar, I think I showed you that hash map में जो value stored है, they are not sorted. ठीक है? ठीक है? They are not sorted. ठीक है? So maybe you're just taking the positive values. ठीक है? That might be the reason might you might be feeling that they are sorted because the hash values are represented sequentially, right? But they are not sorted. If you just try to do it with negative numbers as well, I think I've showed it in the class as well. When I was using the JDB compiler, you can just view the module 3 notes wala doc. Okay, and you will understand that they're not sorted. Okay, but there is another way, another thing that is sorted. Okay, I'll tell you while it near to the ending of the like near to the ending of the module 3. Okay, then your guys will be having much clarity by understanding what's a tree map is. Okay, meanwhile, we'll be just using hash map and hash set. Okay, so you guys know that hash map is basically a way to retrieve in big of one time, just by using the key you'll be getting a value, right? That is called hash map. Oh, my screen is not visible, I'm sorry. uh, Let me just share my screen. I'm sorry. Okay, so is it visible now, guys? हाँ, ठीक है. तो हाँ, कल जैसे बताया था ज्यादा स्पैम मत करना, ठीक है. Use it wisely. If you have any doubt or if you want to get unmuted or if you are not understanding a particular thing, negative चीज है, you can just let me know. Yes spam करोगे. तो like like if you're messaging, then I'm opening the chat, right? It is breaking the flow, right? So just use it wisely. ठीक है. तो हाँ, so we were discussing, let's revise quickly whatever we learned yesterday, right? Right. So I told you about the interview process, right? I hope it helped in some way. Yeah, Chanchal. Learn you do and you're asking. Huh.
Hello Uday, how are you? Yeah, hi bro, बताओ. यार it's a request to you Uday, just please आप अपने पेस को थोड़ा जो आप पढ़ा रहे हो उसको स्लो करिए. आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं. हाँ. लिटरली मैन, मतलब हमारे ग्रुप में यही बात हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है. ऐसे में कोई मतलब नहीं है. ओके. सब एरेस के क्वेश्चंस आ गए हैं, हमें बन नहीं रहे हैं. प्रीफिक्स सम आ गया है, तो ऐसे में कोई पीछे का भी कुछ नहीं बन रहा है, आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा. Okay then. एक्चुअली में So हो क्या रहा है उदय, देयर आर लॉट ऑफ रिपीटर्स इन दिस बैच right, एंड दे आर right. जस्ट डूइंग, दे आर जस्ट मैसेजिंग दैट कि उनको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. एंड शायद उनके वजह से ये इम्पैक्ट बन रहा है कि हम लोग को नहीं समझ में आ रहा. हम लोग नॉन टेक्निकल वाले हैं, इतनी जल्दी हम लोग को गेटअप Right, right. नई टेक्नोलॉजीज So, नहीं बन पाएगी. like at when I'm teaching a particular problem, okay, I'm constantly asking कि like if this particular thing is fine with you guys or not. So only then I'm trying to move forward. Okay, so what's happening is कि maybe the people who already did it, okay, they might be responding. So like the request from you guys, okay, who already know the solution, okay, don't uh, don't let don't I mean don't tell the solution or just ping the solution. It might be bringing a wrong impression, okay, that there are that you guys as a whole understanding a lot of things, right? So that is one of the thing. And the other thing is ki guys, yeah, Chanchal, so if you're not understanding, okay, so like yesterday mostly we have discussed the approaches, we didn't code it, okay. So, like, I was leaving for you guys to think on your own and try to implement on your own. And the next day, we are trying to implement it, just like the previous day we did a question, right? Group all the anagrams. So, were you या clear about that question? या आई हेard, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट है. No, no, Yeah, uh-huh. I understand about that. I understand that question, group anagrams. Hmm. बट द मैटर इज कि वो जो क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो जिसमें अप्लाई हो रही है. एक क्वेश्चन Hmm. था व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू स्ट्रिंग्स. Hmm. सो We द are स्लाइडिंग comparing विंडो two hash कॉन्सेप्ट. maps. या No, don't like that's the reason. No, that's not saying. So don't like one thing is that most of you are putting a barrier in your own mind. Ki, like just because I'm from a non-technical background or just because I'm learning it for the first time, you might be like feeling like kind of creating a barrier on your own mind. Ki, I don't know this. Like this is not what I'm understanding, right? So don't do that. Like guys, like whatever we are understanding, there's nothing like don't tell that there's something non-technical or technical. Even in the college, these things are not taught. This is new for everyone. Okay, I told this multiple times that people who are not from the CS background also, it's the same for everyone, right? So yeah, because of the strength, this problems arise. Okay, when we are scaling up with the lectures, like because of the strength, this thing might happen. But there is no difference between the person who is already like a technical, like a CS person or a non-CS person. These things are completely universal things. Okay, so that is like try to remove that barrier from your mind. Ki just because I'm a non-technical person, I'm not understanding. Maybe the answer is ki maybe we didn't spend the more time in that particular question. Maybe we didn't spend. Maybe we didn't discuss it much further. Maybe we didn't code it. Okay, these could be the reasons. Okay, so try to identify the reasons properly. Okay, and let me know. Like we can work it out. Okay, so if you guys didn't understood any like yesterday's class, I'm fine with just recollecting, revising in a good manner. Okay, so या so that वी जस्ट ओनली वांट दैट आप थोड़ा बेसिक से बेसिक चीजों को समझाएं तो वो ज्यादा हाँ, अच्छा रहेगा. एक बार में क्लियर हो जाएगा, ना हम आपको परेशान करें ना हम परेशान हो. या श्योर. सो लाइक स्पेसिफिकली तो हम कल जो जो पढ़ाए थे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे. उसमें उसमें तो पीपल हु ऑलरेडी अंडरस्टूड और हु ऑलरेडी डिड इट डोंट रेस्पॉन्ड टू द पीपल हु डिडंट अंडरस्टूड. ठीक है, सो जस्ट डू मी अ फेवर बाय टेलिंग मी व्हिच पार्ट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, विल यू डू दैट चंचल? या या ओके. Okay, then great. So we'll repeat whatever the question we did. Okay, one by one. At each step, I'll be just taking pauses and asking you guys if you're fine with it. Okay. So, and let's not escalate much into the newer questions before these things are getting solved. Okay. And don't. And there's another thing. Don't attach fancy words in your mind, ki cadence algorithm or a tree map or these things. Whatever I didn't teach, okay, or not relevant. Okay, just assume this thing. Just trust me. Okay, whatever I didn't teach, they're not relevant yet. ठीक है.
So if I had teach, then it means that it is like if you're naming it as sliding window, don't name it as sliding window. It's just a fancy word which you're going to learn in a very deep manner in the upcoming lectures. Right now it is just that you're taking one character and just leaving one character. Just run it in that way in your mind. Okay. So yeah. So okay then. So let's get started. Okay. Yeah. Are you there? Bro, Chanchal, I think he has muted himself. Okay, take it to the people who didn't understand the yesterday's question. We'll just go through it one by one. Okay, and let's try to understand them. Okay, so what is the question which we did yesterday? This one, right? Sixth ko. है ना? So this is a question of find zero subarray. Guys, finding zero subarray. कितना क्लियर है, कितने लोग को क्लियर है, ये 100% लोग को क्लियर है कि नहीं दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? Okay, let me just create a poll in that case, man. Like if you guys not clear, okay, great. Okay, sure, we'll do this. ठीक है, zero. ठीक है, let me just trigger this poll. ठीक है, do this thing. I'm launching it. Let me know. Oh, nice, yeah, nice. All the three proportions are actually equal. Clear, not clear, and partially clear. Reminding people just vote. Okay, guys. So I think we should do it once more. Okay. So let me just break this question in a very deep manner. Okay. Wait. So the question says ki you're supposed to find the number of subarrays with the sum zero, right? Or the question basically the question that is present in this particular uh, portal is basically says ki if there's any subarray that is having the the question is ki if there's any subarray that is having the sum as zero, right? If subarray is having sum as zero, right? So this is the question. You're supposed to print yes or no. Correct, guys? To the people who voted as not understood, you guys please respond. Yeah. Okay. Okay then, guys. Okay. So yes or no. This is the question, man. Like you have an array. Okay. You basically have an array, and you're just checking if that particular array has any if this particular array has any subarray which is having the sum zero. Okay. So देखो, like what are we doing? Just don't look at the solution. That is the question. Okay. The question says कि array is positive or negative integer if there is any subarray. Okay, with sum zero, at least one size. Okay, subarray matlab. You know what's a subarray, right? So there are a couple of things. Like let me clear this terminology. Okay. There's something called subarray. There's something called substring, right? And there's something called subsequence. And there's something called subset. So for how many people these things are clear? Keep the differences between them. No, right? So I'll tell you. Okay, don't worry. I'll tell you. These both things are same. Okay, substring and subarray. Okay, they are same. So what are they? Let me tell you. His subarray is nothing but
if you have an array, okay, let us assume you have this array. So it is the contiguous part, sub part of this array, right? For example, the 4 elements, this is a sub array, contiguous part. It's not, it can't be like 2 elements from here, 2 elements from here. It should be contiguous. You can see that it's a contiguous thing. Okay, it's a sub array, right? It's an array, the whole array. This is a whole array, and this is a sub array, right? So, okay, yeah. So this is a contiguous smaller part of it. Even this particular thing is called a subarray, right? The whole thing is called subarray, or even one element is called subarray, right? It should be contiguous. That's the part. And substring is nothing but it's self-explanatory. यहाँ पे array है, यहाँ पे string है. Okay, if you have a word like some big word, man, like F D E P S Q something Z Y. Okay, if you have a string like this, the contiguous part of the string is called substring, right? And the whole thing is called a string, normal string, right? And the whole thing can also be a substring, right? At least one value, but it should be contiguous, right? This is a substring, this is a substring, this is a substring, right? It should be contiguous, right? So let me write it like this, right? Then comes the subsequence, right? What does subsequence means? Subsequence means that key, it is kind of like whatever this particular elements have, the same elements will be there. I mean, like a subset of these elements, but in the same order, right? So they can be like they not, need not be contiguous. They can non-contiguous. They can be non-contiguous, right? इसका मतलब कि यहाँ से 2 3 हो सकता है, right? And 5 6 हो सकता है, and then 8 हो सकता है. This is called a subsequence, right? It can be non-contiguous, but in the same order. Same order in the sense you can see that 6 is occurring after 2, correct? 8 is occurring after 6, right? So they are in the same sequence in the order they appear in the actual array, right? So this is the first guy, this is the second guy, third and fourth. They can't be something like this. Okay, it can't be something like this. You can't jumble them, right? They should be in the order. They should be in that particular sequence only. Cool, guys. Right? So that is called subsequence. Subset ho gaya ki no restrictions, man. Like they need not be contiguous, they need not be in the same order. Okay, there's no restriction basically, right? So subsequence ka matlab ye nahi ki they can't be contiguous also. They can be contiguous, but you have a flexibility to choose non-contiguous elements as well, like 2, 3, 6, 8 in that way. This is a non-contiguous thing, right? So similarly, you have something called non-contiguous subset, right? So this is non-contiguous and not in the order, any order. Okay, it's like समझ लो कि bag है, bag में बहुत सारे balls है, ठीक है? You just pick any of the balls, any of the few balls, even one ball or all of the balls. That is called subset, right? So यहाँ पे 1 2 3, there's no order kind of thing anywhere. Okay, it's a set, and you can pick any of the values. That is like 3, 2 or something like this. You just picked up these things, and it's a subset. Is the differences clear in the terminology? ठीक है, तो चलो अभी हमको सब एरे फाइंड करना है, ठीक है? इज हैविंग द सम 0. 0 कैसे हो सकता है? पॉजिटिव वैल्यू से है, नेगेटिव वैल्यू से 0 हो सकता है. एग्रीड? ठीक है, तो अब बताओ गाइस कि एक एरे दिया तुम्हें, उसमें कोई मतलब यू हैव एन एरे, उसमें कोई भी सब पार्ट 0 है कि नहीं, हाउ डू यू फाइंड आउट? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट मी जस्ट पिक अप 4 2 -3 1, okay, 6, right? So this is a subarray. You can see that this particular subarray, ठीक है, subarray का मतलब समझ में आ गया. This particular subarray is having the sum 0, correct? So you are supposed to return yes. ठीक है, you are a human, you understood कि ऐसा है, तुम देख लिया, ऐसा ऐसा कुछ कैलकुलेट कर लिया, right? And you did it. But how does a computer, like how to write a computer program which is doing the same thing, right? So that is our primary goal. Agreed, guys? करेक्ट. तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि टू द पीपल हु डोंट नो, ठीक है, टू द पीपल हु नो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस, ठीक है? इट माइट हेल्प यू.
Okay, if you're not if you find that these things like I'm repeating the same thing, okay, there's one third of the population in that way. Try to do these problems, okay, try to use this time as well, okay. So yeah, guys, so sum is 0, right? So this particular subarray ka sum is 0, right? But how do I find it? Okay, one way that is coming into my mind is writing a code like this. Writing a code something like this. So this particular code mein yahan pe, before this loop gets started, sum is always 0, right? So you can see that, okay, how this code works. A of j, okay, and if sum is equals to 0, if at all sum is equals to 0, in that case, then I'll say I'll just return true or whatever, right? I'll just return true. So this is the code that is coming inside my mind for the first time. Okay. So how does this functions? Okay. So you have this array 4, 2, -3. Let me dry run with this code. Okay. So you have this particular, you have the sum as 0, right? Initially. Okay. There are two loops that are running from 0 to n, and this guy is from I to n, right? So this particular thing will generate all the subarrays. एक बार सोचो कैसे, एक बार सोचो कैसे जनरेट कर रही है, राइट? सम 0 है, राइट? यू ऐड 4 टू इट, ठीक है, राइट? फिर लाइक आई का वैल्यू 0 है एंड जे का वैल्यू इज आल्सो 0, राइट? फॉर आई का वैल्यू इज 0, ये पूरा ही चलेगा, राइट? दिस गाय, फॉर आई का वैल्यू 0, ठीक है, जे का वैल्यू 0 से n तक जाएगा, राइट? राइट? सो n-1 तक जाएगा, राइट? सो सम इज 4, you won't do anything, and then you will add 2, that is 6, correct? Nothing. You will minus 3, it will be 3 again. You'll add 4, it will be 4 again. You'll add 6, it will be 10 again, right? So in this particular iteration, first you have created the sum of this, then you have created the sum of this, then you have created the sum of this, and then you have created the sum of this, then you have created the sum of this. Okay, so this is for I equals to 0. Agreed, guys? है ना? So now I का वैल्यू 1 हो गया, करेक्ट? अगेन सम 0 हो गया. यू कैन सी हाउ इट इज वर्किंग. I का वैल्यू 0 हो गया. अगेन दिस गाय, J guy will run from 1, 2, 3 and 4. ठीक है, he'll run through. ठीक है, so sum का value will be 2 now, correct? So this particular thing, and then you'll add -3 to it. ठीक है, it will be -1, right? And then you will be adding 1 to it, and it will be 0 at the end, right? So you have chosen this, you have chosen this as another subarray, you have chosen this, and you have chosen this as well, right? Matlab, if you continue it, let's not return anything, let me continue it, so it will be 6. Now I का value will be 2. ठीक है, I का value is 2, right? For I का value 2, J का value will be 2, 3 and 4. तो sum वापस 0 हो जाएगा, and now it will be -3, 1, 6. मतलब -3 पहले होगा, +1 that is -2, +6 that is 4, right? So are you guys able to see how you are using two loops to generate all the subarrays? Is there any subarray that will be missed if I keep on doing this thing? Can you see? I am iterating through all the starting position and I'm going till all the ending positions, right? So don't you think I'm generating all the subarrays? Guys, this is like, you might be feeling, why am I explaining such a trivial thing? But it's not an easy thing. So, I mean, this is an easy thing, but this is you are going to repeat it hundreds of times when you're like, not hundreds, thousands of times in a year, right? You're generating all the subarrays, right? So writing a brute force thing is the most important thing, guys. Like this is the first step in your problem solving skills, right? So you are supposed, if you know, even if you know the final answer, still you will continue to write it in a brute force way to show it to the interviewer that you're capable of writing it in a brute force way. Okay. So are you able to see how am I adjusting the starting point? How am I adjusting the ending point with this loop, right? How am I generating all the substance, correct? And definitely it's a laborious process which is taking big of n square. Do you guys agree with this part?
करेक्ट? तो ये बिग ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है इसमें, राइट? सो बिग ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है, डेफिनेटली यू नीड टू डू समथिंग, ठीक है, so that this time complexity will reduce, ठीक है? So what I am feeling is कि इससे कम करने के लिए, ठीक है, so like we are repetitively calculating the same thing is what I feel. If at all you want only just the zero, some zero, so how about so what I thought is, how about just storing the, like I won't name these things, guys. You don't, देखो prefix sum हो गया, like you have prefix sum, you have sliding window, है ना, you have two pointers, ठीक है, you have tree map, ठीक है, you have like lot of things like hash set, ठीक है, ये सब चीजें मैं अब तक पढ़ाया नहीं तुम लोग को, राइट? सो आई प्रेफर, ठीक है, कोई बोलता है कैडेंस एल्गोरिथम, क्यों भाई कैडेंस एल्गोरिथम कब पढ़ा है मैंने नहीं पढ़ा अब तक तुम लोग को, राइट? डोंट स्पीक these वर्ड्स, ठीक है, टिल नाउ, because like if you speak these words you might be feeling that we are skipping particular topic and learning, like we are going over it, ठीक है? There's no such thing like that, ठीक है? Whatever you're learning is just the basic things, like basic implementation of the programming, right? So don't name such things. When the time comes, I'll name these things, I'll give them a proper name, that these are the types of questions that you need to solve, and you can name them in this way. Right now, don't confuse yourself, don't feel that you don't know these things because I'm like because this was not taught or this is missed, okay? So if at all there's anything that is prerequisite for a particular thing to understand, I'll teach that thing first, like, and then I'll come to this, just like I did with the lists, okay? So what I'm saying is, guys, ठीक है, what I'm trying to say is कि right now, ठीक है, I am just calculating the, like, the first iteration, मतलब I equals to 0 को ही calculate कर रहा हूँ. I'm not calculating anything. I won't be calculating all these things. I'll only calculate I equals to 0, मतलब इस particular iteration को ही calculate करूंगा. मतलब I'll be just calculating this thing. I'll be just calculating the sum of this including this, some of this also being included, some of this also being included, some of this also being included. Only these things I'll be calculating. मतलब 4 calculate करूंगा, 4 plus 2 6, 6 plus minus 3, that is 3, and then 6 plus 4, 6 plus 1, 3 plus 1, that is 4, ठीक है, 4 plus 6, that is 10. I am just calculating this thing. लोग इसको prefix sum बोल देते हैं, ठीक है, this is called prefix sum, but I won't use this term, ठीक है? Bus, I'm just adding this value, I'm just adding this, like both the values, I'm adding all the 3 values, I'm adding all the 4 values, I'm adding all the 5 values, ठीक है? All the 5 values का ये है, all the 4 values का ये है, all the 3 values का ये है, all the 2 values का ये है, all the first value का ये है, right? You can represent it as like prefix of I. There's nothing complicated, this is just the basic instance of programming, ठीक है? Prefix of I मतलब इस position पे 3 पे, what is 3? Prefix of 3, that is nothing but a of 1, a of 2, and a of 1, a of 0, a of 2, a of 3, right? So till it is a of I, I'm just adding it. Agreed? Same thing with any other value as well. So yesterday I showed you mathematically, this is maths, man, this is not again, okay? So this is just maths, okay? If these both are equal, provided j is greater than I, इसका मतलब देखो यहाँ पे 4 is equal to this 4, ठीक है? What does it mean is कि whatever values you added, ठीक है? What does 4 means? 4 means that कि 4 plus 2 plus minus 3 plus 4, है ना? What does this guy mean? This guy means that plus 4, है ना? तो देखो बाद में जो भी ऐड किए, these are nothing but 0. That is the reason why if you're just getting the prefix sum, just you're getting these the starting value से last तक, ठीक है? If you're getting the same value again, it means that all the values that you have added is 0. So can you see कि without using the start point, you're able to find if there's a subarray that is having the value 0, correct? So if these things are equal, it means that these both are equal. A of I plus a of I plus 1, you can see that this thing is greater, right? So a of j as well. So if you cancel all these things, don't you see that a of I plus 1, a of I plus 2, वैसे 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 a of j
It is equal to 0. Don't you think, guys? है ना? तो लाइक कैन यू अंडरस्टैंड कि हम क्या करने वाले हैं? हम इसको मतलब स्टार्टिंग का एलिमेंट को लेके इस पोजीशन तक हम ऐसे सम करते जा रहे हैं एंड आई एम स्टोरिंग इट समवेयर, ठीक है? और अगर सेम वैल्यू कभी पहले आया, इसका मतलब कि ये अब तक जो भी ऐड किया वो पहले से अब तक जो भी ऐड किया सब 0 है। ये कंक्लूजन लिया मैंने। सो दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स दैट आई एम यूजिंग टू फाइंड आउट कि भाई 0 है, मतलब यू हैव अ सब अरे दैट इज 0। तो ये सबको मैं बोल रहा हूँ, ये सबको मैं हैश मैप में स्टोर कर लूंगा somewhere, like with the index also it's fine, ठीक है? With the index also it's fine. It's not necessary with the index, but it will be necessary in the other topics, right? The moment 4 is encountered, ठीक है, you can check कि at 0th index also I got 4. Now also I'm getting 4. So dude, I have a subarray which is not starting from the start, but it is 0. बस इतना ही है guys. Like this is what I've explained yesterday. अब इसमें क्या चीज समझ नहीं आई बताओ? लास्ट के 2 लाइंस मतलब these two. देखो लास्ट के 2 लाइंस में सी I'm finding a prefix of I. I'm finding a prefix of J. If both of them are equal, जैसे prefix of I यहाँ पे 4 है, यहाँ पे prefix of J is also 4, right? So they are equal. It means that all the values starting from 0 till I and all the values from 0 to J, ठीक है? They are equal, right? If they are equal, ठीक है? LHS equals to RHS है, right? So I can just like these things are equal with these things. इसका मतलब ये सब जो भी है, they will be 0, right? Mathematically, correct? सब subtract करो, subtracting both the sides with these values, correct? Yeah, sure, sure, sure bro, वो समझाऊंगा, ठीक है? But are you guys able to see, are you guys able to judge easily कि yes क्यों और no क्यों? ठीक है, तो वही कर रहा था मैं यहाँ पे। you can see कि I created a function that is called find zero subarray, and अगर वो true है तो yes print करो, वरना no print करो, that is the driver code, ठीक है? And यहाँ पे you can see that I've created a hash map, ठीक है? और मैं सम करता जा रहा हूँ, ठीक है? दिस इज हाउ यू सम, राइट? द सम व्हिच आई एम टेलिंग, ठीक है? दिस इज हाउ यू सम। इनिशियली 0 था, अब एक एक करके वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, करेक्ट? इन ईच आइटरेशन, एग्रीड गाइस, राइट? या श्योर, आई कैन एक्सप्लेन द कोड मैन, लाइक इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? सो देखो, यू हैव एन अरे, ठीक है? यू हैव दिस अरे, ठीक है? यू हैव दिस अरे एंड यू आर सपोज्ड टू आइटरेट दिस अरे, ठीक है? एंड यू आर क्रिएटेड अ सम वेरिएबल, इनिशियली इट इज 0, यू आर एडिंग फर्स्ट वैल्यू टू इट, दैट इज 4 टू इट, ठीक है? And I'm just checking if it is present, like I'm just putting it inside the hash map, है ना? तो hash map में, like this is the hash map, I'm putting 4 against its index, that is 0, है ना? In the next iteration 4 plus 2 होता है, right? I'm adding 2 here, ठीक है? It will be 6, right? I'll be mapping 6 to 1, right? And then I'm here, that is 6 minus 3, that is 3. 3 will be mapping to 2, correct? And then 1, right? You can see that 4 वापस आया, right? So only at that position, ठीक है? In that map I'm just checking कि map dot contains की if the sum is present or not. तुम देखो कि 4 पहले भी था, like again you got the 4, right? So if at all you again you got the 4, it means that bro, like whatever you added from that position, you can see that from that position whatever you added, they are just resulting to 0, you can see, है ना? This is -1 and then +1, right? This resulted to 0, and that is obvious, right? So if at all you found out again the same value which you already pushed, okay, then you will return true. Or if at all sum is 0, it means that कि यहाँ पे -4 है, समझ लो, यहाँ पे -4 है, समझ लो, right? So यहाँ पे -4 हो गया, तो whole sum will be 0. Then don't you think this whole thing is a subarray which is having the sum 0, right? So that is the reason why I'm doing that. शेफान, इज दिस थिंग क्लियर कि सम इक्वल टू 0 मतलब है प्रीफिक्स सम, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना भी सम है दैट इज 0. इट मींस दैट
It means that this thing can be understood as a sub array with the sum 0, right? हम 0 को नहीं रख रहे ना पहले ही. So that is, to handle that case, I'm just putting sum equals to 0. Shall I trigger the poll again? Can you guys tell me? Ki, like, it is so balanced, man. Relaunch the poll. Let me relaunch. अब बताओ कितने लोग को क्लियर है ये चीज, दिस कॉन्सेप्ट. एक्सप्लेन सम इक्वल्स टू 0. ब्रो, सम इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि द सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है? मतलब इस पूरा का लाइक सम का मतलब व्हाट इज द सम? सम इज नथिंग बट द sum of all the elements from the starting till the ith index, correct? So whatever is the sum from the starting till that index, ठीक है, that particular sum is 0. इसका मतलब this could also be a subarray which is having the sum 0, correct? तो इसको like you won't be checking it in the hash map because there is no way to check that, right? हम subarray मतलब जो मतलब like 0 is not put into the hash map initially, ठीक है? So this is a base case, this is like a base case, ठीक है? वरना this will be missed, right? So if the whole thing is 0, then again when 0 will occur, only then that will be considered, right? Not from the starting, right? तो उस चीज के लिए एक बार सम इक्वल टू 0 किया. या आई थिंक प्रीटी मच सबके लिए क्लियर है एक्सेप्ट फ्यू पीपल, ठीक है, जिनके लिए पार्शियली क्लियर है, नॉट क्लियर है, बहुत ही फ्यू लोग हैं, ठीक है? सो गाइस, तुम लोग को बताता हूँ कि ट्राई टू थिंक, ठीक है? तो एक बार सोचना, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? इट्स नथिंग रॉन्ग कि तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, बहुत लोग को समझ में आ गया, इट्स नथिंग रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है? सो at times like you are not able to connect the dots in a very fast manner, ठीक है? So spend some time, ठीक है? सोचो कि एक एक करके like try to do the iteration, ठीक है? एक एक करके try run करने की कोशिश करो कि next क्या हो रहा है, next क्या हो रहा है, ठीक है? So it will be understood eventually. Yeah, anyone wanna talk? हाँ, I'll tell that. Wait. इफ अंदर के सम 0 क्यों ले रहा है ब्रो? चंचल, सम 0 इसीलिए ले रहा है टू नो कि स्टार्टिंग से अगर कोई सम 0 है, टू टू नोट दैट ना, लाइक दैट केस वोंट बी प्रेजेंट ना. फॉर एग्जांपल इसी केस में लेता हूँ, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस केस, ठीक है? इट इज 2, इट इज -3, इट इज 2 अगेन, ठीक है? और -2 और समथिंग, ठीक है? नाउ लेट अस अज्यूम आई हैव 1, right? And then I have 5. Okay, this is another array, right? So can you see this? Excellent. ये 6 हो रहा है, right? So this should be -1. Yeah. So can you see कि like sum का value 4 है, 4 map to 0, right? Sum का value 4 है initially, right? And then 2 will be added, it will be 6, 6 mapping to 1, right? And then 3 will be added, it will be 3, right? 3 mapping to 2, right? 2 will be added, it will be 1, right? 1 mapping to 3, ठीक है? -1 will be added, sum will be 0. तो अगर if at all I don't put this clause, ठीक है, 0 will be mapped to 4, ठीक है, and then 5 will be added, 5 will be mapped to 5, you won't get anything, ठीक है? But there is a subarray that is having the sum 0. This is a subarray, right? This is a subarray that is having the sum 0, 0, correct? तो ये चीज मिस हो जा रहा है ना, because of just blindly, because of ignoring this particular thing, क्योंकि हम मैप में ढूंढ नहीं सकते 0 को, करेक्ट? अनलेस तुम 0 को इनिशियली ऐड कर लिया -1 के पास. सो यूजुअली पीपल ये करते हैं, ठीक है? यूजुअली पीपल डू दिस, ठीक है, 0 को -1 के पास. बट लाइक आई एम जस्ट टेकिंग दिस पर्टिकुलर एडिशनल चेक कि सम 0 हो गया तो डू दिस करके. गॉट इट? हेलो? या प्रेशिल, I've asked you to unmute, man. You are not unmuting yourself. यस सर. हाँ ब्रो. सर आपने अभी बोला था ना कि 4 अगर फिर से आ गया तो वो लूप के बाहर चला जाएगा. वो मुझे समझ में नहीं आया कि अगर 4 से बाहर चला जाएगा और उसके अगले वैल्यू -4 होगी तो वो कैसे इक्वल टू 0? लूप के बाहर कहाँ चला जाएगा? व्हाट डू यू मीन? लाइक रिटर्न ट्रू कर देगा ना? हाँ, रिटर्न ट्रू कर देगा. तो what happens ना, if you are in a function and if you are returning that,
It means that doesn't matter where you are, you will just return from that call. मतलब you will just end this particular thing and you'll directly return. You'll be returning to this position. और जहाँ पे कॉल हुई थी पहली कॉल, you'll be returning there with the true value. क्योंकि this thing got triggered, है ना, return true got triggered. ओके, अगर रिटर्न कर देगा ट्रू तो मतलब वो या रिटर्न कर दिया मतलब you got the answer, right? यस, बस ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो देखो गाइस, लाइक दिस क्वेश्चन कुड बी एक्सटेंडेड, ठीक है, मैं बता रहा हूँ दिस कुड बी एक्सटेंडेड, ठीक है, जैसे कि लाइक आई एम स्टोरिंग एन इंडेक्स एज वेल ब्रो, आई एम स्टोरिंग एन इंडेक्स एज वेल, राइट? सो यूजिंग दिस इंडेक्स कि पहली बार जब 4 आया और अभी जब 4 आया, ठीक है, कैन आई देखो 3 पोजिशन पे 4 आया, राइट, पहला 0 पे आया, राइट? सो कैन आई से कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सब अरे that is having the sum 0 instead of just returning the value, guys. हाँ, या वही कर रहा हूँ ब्रो चंचल, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो 4 ऑलरेडी आई थी, यू हैव मार्क्ड इट टू विद द 0, राइट? अभी 4 वापस आई विद यू आर सपोज्ड टू मार्क इट विद 3, बट यू हैव चेक्ड दैट 0 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है? तो तुम करोगे नहीं वो चीज को, राइट? यू आर रिटर्निंग ट्रू बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक विच इज जस्ट आस्किंग कि सबरे है कि नहीं, राइट? मैं बोल रहा हूँ, राइट, what I am talking is, what I am thinking is कि if at all this particular thing, ठीक है, if at all this particular thing we are harnessing the fact that you are storing the index as well, can you find the length of the string, length of the sub array? Yes, you can. देखो till here, let me rewrite it, ठीक है, till here you have ये है ना 2 and क्या, हाँ 2 and -3, right? So till here you have the sum as 4, till here you have the sum as 4, ठीक है? तो 4 is mapping to 0, ठीक है, this 4 is mapping to 3, ठीक है, you know that यही है जो जिसका सब अरे 0 है, राइट? तो 3 - 0 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो टू नो द लेंथ? सब अरे with 0 sum, can you? हाँ, करंट इंडेक्स में यू गॉट 4, पहले भी 4 आया था, इसका मतलब उसके बाद से जो भी ऐड किया दैट इज नथिंग बट 0, राइट? गाइस बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? टेल मी, है ना? तो इस तरह से मैं बार बार चेक कर, लाइक एवरी टाइम आई एनकाउंटर बेस्ड ऑन द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैं लार्जेस्ट वैल्यू को अपडेट करता रहूंगा। तो सोचो कितना मस्त हो गया ये। तो एक बार मैं कोड करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एनकाउंटर किया तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग, ठीक है, मैं क्या करूंगा, लाइक आई हैव एन आंसर वेरिएबल विच विल बी जस्ट चूजिंग की वॉट एवर इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर और आई माइनस, ठीक है, एमपी डॉट गेट सम, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल, राइट? सोचो इसके बारे में, लाइक दिस इज द लेंथ ऑफ द सब अरे, राइट, विच इज हैविंग द सम एज 0, राइट? एंड दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, करेक्ट? तो आई कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है, आंसर को इनिशियली 0 रखूंगा, राइट, एंड वॉट एवर इज द लेंथ, ठीक है, आई जस्ट मार्क दैट थिंग। क्यों क्यों? लेकिन इस केस में आई नीड टू कंसिडर दिस इज इन डिफरेंट वे, क्योंकि यहाँ पे गेट होगा तब भी हो पाएगा, राइट? सो आई जस्ट मार्क इट एज इफ सम इज इक्वल टू 0, I'll tell you what is the answer. If sum is equals to 0, इस केस में answer is nothing but I plus 1 because it's the largest. यार प्लस 1 करना नहीं करना एक बार सोचना पड़ेगा ब्रो, कि प्लस 1 करूँ या ना करूँ। देखो मेरे हिसाब से, ठीक है, मतलब दैट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि कब प्लस 1 करना है कब वो करना है, राइट? तो देखो यहाँ पे इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, एट द इंडेक्स 3 यू एनकाउंटर्ड 4, at the index 0 you can encountered 4, right? So if you subtract these things, 3 minus 0, you are getting 3, which is the actual answer, right? So do you think you need to add 1?
तो एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेना +1 करना है कि नहीं करना है, तो उसके हिसाब से बता सकते हो तुम। क्यों गाइस, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ बताओ। सो आंसर, व्हाट इज आंसर? आंसर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, लेंथ ऑफ मैक्सिमम सब एरे विथ सम जीरो। बस इतना ही डिफरेंस है। just see how minute the difference is. Just see how minute the difference is, man. कि like if at all sum is zero, it means that कि starting से अब तक जो भी है that is the longest array ना, अब तक that will be the longest sub array, so you can directly update it. You don't have to check कि max करना है कि नहीं, या उसमें भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, you can do that here as well. But are you getting the feel of this question, guys? This will be always maximum, so that is the reason I directly updated it. But if you don't feel nice, then you can do this. लाइन नंबर 18 देखो, लाइन नंबर 18 में सी गाइस, सो लाइन नंबर 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ आंसर, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी नहीं, आंसर इज ग्रेटर देन नहीं, देखो, इफ आंसर इज लेस देन I माइनस mp डॉट गेट सम। देखो गेट सम इज टेलिंग मी व्हाट इज द प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है, मतलब कब आया था पहली बार इंडेक्स उस पर्टिकुलर सम पे, इंडेक्स में, राइट, वो चीज बताएगा, एंड ये चीज बताएगा कि अभी कब आया, राइट। सो इफ इट ऑल द सम इज प्रेजेंट, मतलब अभी का वैल्यू से पहले जब आया था उसके बीच में जो एरे है दैट इज द सब एरे विद द सम जीरो, राइट। सो आई जस्ट assign answer to that, the same thing which I'm writing it in this way, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, if this particular thing is greater than answer, update the answer with that value, right? That is what math.max do. math.max करेगा कि आंसर बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है वो आंसर में दे दो वापस। अगर आंसर बड़ा है तो आंसर को आंसर में, लाइक इट इज असाइनिंग, सो आंसर आंसर ही रहेगा। अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया, यू आर असाइनिंग दिस टू दिस। टेल मी गाइस, let me just open that question. कहाँ है क्वेश्चन? Oh my god, I think it is present here. Yeah. तो देखो यहाँ पे you're trying to find the largest subarray with the sum zero. Agreed? So what is the correct? Joshna, can you unmute yourself? Ravitesh, I told it is I minus get pro. I think it is that. ठीक है, तुम देखो यहाँ पे, like let me just do this thing. ठीक है, it's not always greater, ठीक है, in this point it will be greater, ठीक है, at this point it is greater, ठीक है, यहाँ पे I don't have to do math.max, ठीक है, but यहाँ पे you don't know what is greater, ठीक है, it could be possible that कि like if you take this example, जैसे देखो यहाँ पे 15 है, -2 है, राइट, 2 है, राइट, -8 है, 1 है, 7 है, 10 है, 23 है, राइट। तो you can see that यहाँ पे सम क्या होगा, फर्स्ट वाला सम 15 होगा, then it will be 13 and then it will be 15, right? So it is marked with 0. now यहाँ पे index 2 है, so 2 will be the answer, final answer, right? लेकिन रुको, like I won't update it, ठीक है, उसके बाद -8 आएगा, right? -8 is nothing but 5 and then 6 and then 6 plus 7 is 13, 13 plus 10 is 23, right? So you can see that 13 आया ना, so 13
यहाँ पे भी है, राइट? सो 13 यहाँ पे एट द इंडेक्स 1 है, एंड 13 यहाँ पे यू आर एट हियर, करेक्ट? At this point you are at here, right? So it is 6, correct? So 6 minus 1 is 5. So you can see that this particular thing is also a subarray, right? So as you move forward, there could be a position where you might be finding a larger value, correct? So you don't know that, you just need to always take whichever is maximum, you just need to take that. So guys, देखो, and there's another thing, ठीक है? The moment देखो यहाँ पे you can see that यहाँ पे वापस 15 आई, right? I should not update it in the hash map. Whatever is initially there, that only I need to keep. Can you tell me why I should not update it? Can you tell me why? देखो यहाँ पे 15 था, 13 हुआ, 15 हुआ. I'm not updating it in the hash map. Can you tell me why? करेक्ट, वी वांट द लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. अगर तुम अपडेट कर दोगे वापस कहीं ओके 15 आया, तो यू विल बी कैलकुलेटिंग फ्रॉम हियर, व्हिच आई डोंट वांट. आई वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस पोजीशन ना, फ्रॉम दिस पोजीशन. सो जो सबसे पहले है आई विल जस्ट कीप दैट ओनली, ठीक है? तो उसके लिए इस कोड में क्या चेंज करना होगा? आई विल बी राइटिंग एल्स हियर. इफ इट इज नॉट प्रेजेंट ओनली देन यू अपडेट ब्रो, वरना दूर रहो. करेक्ट guys? Tell me if you guys understood this or not. Repeat. देखो, see guys, what I'm saying is कि you encountered 15 minus 2 2 minus 8 as and so on, right? So what I'm saying is कि पहले 15 आया, in my hash map I put 15 against the value of index 0. Now minus 2 आया, it will be 13 against the value 1. वापस 15 आया, ठीक है? वापस 15 आया, ठीक है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक बार ध्यान से. वापस 15 आया, ठीक है? तो आई शुड नॉट बी अपडेटिंग इट, ठीक है? क्योंकि वापस 15 आया यहाँ पे, तो आई जस्ट नीड टू सी कि पहले क्या आया था अभी क्या आया, दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज 2. तो आंसर 2 हुआ, ठीक है? इफ आई हैड अपडेटेड इट टू 2 अगेन, ठीक है, इसको 2 कर दिया, अगर आगे जाके कभी 15 आया, यू विल बी सबट्रैक्टिंग इट फ्रॉम दिस पोजीशन, बट दैट वोंट बी द लॉन्गेस्ट वन, करेक्ट? दिस वन विल बी द लॉन्गेस्ट वन, correct? So that is the reason why I won't update it inside 15. Correct? So you will be updating it only if it is not present, okay? If it is present, okay, you won't update it, you just take the maximum and you just move forward. Prince, you're not finding the sum of all the subarrays, you're only finding the sum of subarrays starting with the first element, okay? And then you're finding if the element sum is repeating. If the sum is repeating, okay, it means that there is a subarray that is from that position where it was repeating, okay? From now it is 0. That is how you are getting it. अरे ब्रो चंचल, एक्चुअली ना मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इससे भी स्लो कर सकता हूँ, बट मुझे लग रहा था कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज मेंटेनिंग दैट पेस, ठीक है? इससे भी बहुत आराम, लाइक आई वाज लाइक आई यूज्ड टू टीच a batch in AccuJob only, which is like where students are really like they are from school, okay? So it's Accu school ka, and they used to not understand even the basic things, okay? So उसमें बहुत मेहनत लगती थी, right? So like if based on the capability of the students, we can adapt to it, ठीक है? But you guys need to, I told you right in the first class कि बताओ फीडबैक दो, ठीक है? क्योंकि मैं तुम लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ, लाइक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करा सकता हूँ और बहुत ही नीचे लेवल का भी पढ़ा सकता हूँ. इट्स हाउ यू अडेप्ट टू यूर, बेस्ड ऑन दैट ओनली आई कैन टीच, ठीक है? कोई नहीं, ऐसा पढ़ाएंगे तो 1-2 क्लास ज्यादा लगेगा, बट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स फाइन 1-2 क्लास ज्यादा भी लगेगा तो. ठीक है? सो गाइस, इज दिस थिंग क्लियर विथ यू ऑल? Right, so this is the coolest code man, like you're finding the largest value, है ना? तो सोचो guys, अब ये बताओ अगर कोई बोला कि नहीं नहीं देखो कुछ कंपाइलेशन एरर आ गया यार, n equals to length, oh भाई it is already present ना. So हाँ guys, now instead of the length, if someone asks me कि can you return the sub array bro,
कैन यू रिटर्न द सब एरे इंस्टेड ऑफ द लेंथ? तब कैसे करोगे? cool, my bad. I copied it from there ना, इसीलिए गलती हो रहा है ना. ठीक है, it worked. Let me submit it. Voice of 405 cases. Okay, it worked for all the cases. Great man. ठीक है, तो देखो ये हर केस के लिए चल गया, राइट? ओके कूल. हाँ, so guys tell me now, instead of returning the length, now you're supposed to return what is the sub array, maximum sub array. बताओ मैक्सिमम सब array क्या है, वो रिटर्न करो भाई, मेरे को ये सब नहीं चाहिए. If someone says that, what will you do? Will maintain two variables. ठीक है, the question is कि सब array रिटर्न करने बोला, what is that thing that defines two sub arrays? मतलब एक सब array, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट, करेक्ट? मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट डिफाइन करेगा, है कि नहीं गाइस? राइट? तो देखो ये i है, ठीक है, दिस इज i एंड दिस इज j, राइट? सो विच एवर इज मैक्सिमम आई एम जस्ट अपडेटिंग इट. ठीक है, आई j माइनस i कर रहा हूँ. i क्या है? mp डॉट गेट सम. ये समझ में आया सबको? ये तो समझ में आ गया ना, दिस पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट? या मंजुला, ओके श्योर. सो यू आर गेटिंग, you are finding this difference. ठीक है, whichever is difference, whichever is the maximum that you are putting, right? I'm cool with that. What I am thinking is कि without, like, based on the maximum value, I'll be maintaining two more variables, that is starting index and ending index, ei and si. ठीक है, so let me do that. ठीक है, so ei, देखो si is initially -1 समझ लो, ei is nothing but -1 समझ लो, right? So what I am thinking is starting index को 0 मान लेता हूँ, ending index को let me mark it as something else. ठीक है, so ठीक है, so you know that ending index minus starting index +1 करूंगा, I'll be getting the answer. ठीक है, that is always there. Answer मतलब length है ना, but I'll always again maintain another variable. ठीक है, तब देखना ध्यान से एक बार. देखो, हाँ देखो, अगर this guy is greater than this, if at all this is greater than this, you're updating. ठीक है, so let me break it down. ठीक है, if, just a second guys, let me open my keyboard. हाँ, so if I minus mp dot sum, ठीक है, this guy is greater than answer, ठीक है, only then you'll update answer. Agreed? Guys, is this clear? सेम चीज लिखा है यार, कोई चेंज नहीं है. Is this clear or not? Tell me. Correct? Okay. इसमें while you're updating, ठीक है, अपडेट कर रहा हूं मतलब सबसे मैक्सिमम वाला मिला है कि नहीं, राइट? While you're updating, I'll just update the starting index as mp minus get sum. यहाँ पे +1 करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ मुझे. And ending index तो is nothing but I value. How many of you agree with me? How many of you don't agree with me? See, you're updating matlab you found a largest value now, right? So you found a largest value, ठीक है, and now this particular thing, ठीक है, this will be pointing to, ठीक है, I base point matlab this thing mp dot get sum is pointed to this particular index, ठीक है, but I am so it will be from here na, if you are including it, it will be from here na. This is the index, मतलब I plus 1 से till j is the sub array, correct? तो I जो मिला है, you will just add 1 to it to know what is the starting index. Agreed or not? है ना? और ये तो है ही, right? So this is one of the case. ठीक है, यहाँ पे भी मुझे सेम करना होगा, because here also always I'll be getting the largest value. ठीक है, even in this case I'll be writing ei equals to I plus 1, right? And sorry, ei equals to I, not I plus 1, and si equals to 0. Agreed?
गाइस i plus 1 नहीं i रखूंगा बिकॉज i plus 1 इज शोइंग द लेंथ. ठीक है, यहाँ पे लेंथ, आंसर इज लेंथ. ठीक है, आई कैन मार्क इट एज आंसर की जगह आई कैन मार्क इट एज लेंथ ऑल्सो. ठीक है, लेट मी राइट मार्क इट एज लेंथ. ठीक है, ठीक है, लेट मी मार्क इट एज लेंथ. ठीक है, सो लेट मी रन दिस. कंपाइल कर रहा हूँ, लेट मी रन दिस. या you can see that this cannot find symbol. Okay, I think it is length. This one is also length. Right. So let me just compile and run. Okay, it is working. Okay, because I'm not using the SI and EI. Okay, but before leaving, okay, before exiting this function, okay, what I'm going to do, I'm going to print them. Okay, so देखो मैं ऐसे करने वाला हूँ. Right, so I'm going to run int of I from SI and int of I will end at EI, and I'll do plus plus, and I'll kind of print the what array a of I and a space. अब देखो guys, मजा आएगा. देखो from SI to EI, I'm just printing it. ठीक है, you can see that like output difference देखना. Just look at this thing that is cut off. ठीक है, that is exactly, ठीक है, that is exactly the subarray which we are looking for, the largest subarray. And 5 को ignore मारो, 5 is the returned value. Are you guys able to see that? Hello? है ना? तो देखो, अगर मैं इस चीज को, और अगर तुम लोग चाहते हो कि और अच्छी तरह से दिखाऊं, लाइक यू कैन जस्ट सी दिस थिंग. एक सेकंड, आई कैन जस्ट सी दिस थिंग. ठीक है, एवरी टाइम दिस इज बीन अपडेटेड आई कैन प्रिंट दिस. So this is for line changing, right? So every time I'm printing, before updating, I'm printing. Before updating, I'm printing. See what will happen. Let me run it again. Compile and run. तुम देखो, is already defined. Yeah, this is pain, man. Pain. See this thing. अभी क्या? Okay, cool. So you can see that -2 and 2. This is one of the array that is negative, right? And this thing got printed and it got updated to this particular thing, right? And then it is printed at the end and 5 is returned. Okay, in this way you can create the largest subarray with the sum 0. Right, so in this way you are just noting ki jo maximum hai, right? So why did we +1 for the starting index? Arundhati, I told this. Okay, why are we doing +1 from the starting index? Okay, because this particular thing is representing the point where the sum is first encountered. From that point, the next point, say you'll be the actual array gets started, which is going to be 0, right? तो ये चीज मैं दिखाया था अभी 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 मैं क्लास में दिखाया था. ठीक है, तो एक और बार सोचना इसके बारे में. ठीक है, so just see guys how many variations of questions could be made from this question, right? Shall we move forward, guys? समझ में आया सबको द अप्रोच एंड एवरीथिंग, है ना? तो देखो, तुम लोग बहुत पूछ रहे हो. ठीक है, दिस क्वेश्चन, which question?
find all anagrams ना, so let's do this find all anagrams, ठीक है? तो यहाँ पे करें कि यहाँ पे करें, बताओ? या so guys, find all anagrams करेंगे इसके बाद, ठीक है? After that, ठीक है? So are you guys ready? Hello? अरे okay man, portal is not a big deal man. Like if you see, like it's the same thing, right? The only difference you will find in portal is what I showed yesterday, right? On how you will be taking the input. यहाँ पे input कुछ है भी नहीं. You're just supposed to take two strings, ठीक है? You're supposed to take input of two strings and then you're supposed to find the anagram. But you're supposed to call it. बस इतना ही है, right? So you can do it here. The test cases are good and also like this thing where there's no need to write this. Okay. So after I do here, I can copy it here in the AccuJob portal and then I'll do it. Okay. Anything is fine. Okay. ठीक है. तो let's check man. मतलब एक बार सोचो, मैं बताया था इसके बारे में, right? So let me just repeat it. ठीक है. A C D क्या है? Baba CD. Right, this is the string S, and you have something called P, that is ABC. Right, guys, अभी सोचो, ध्यान से सुनना, ठीक है? समझ नहीं आया तो बताना, ठीक है? मैं पोल वापस एंड करके लेट मी जस्ट एडिट द पोल. यार इसको ठीक है, पोल बाद में बनाते हैं, छोड़ो, लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम. ठीक है, तो देखो इसको देखो, ठीक है? ना तो क्वेश्चन सेज कि यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, ठीक है? S1 एंड P, ठीक है? So what I am saying is कि you're supposed to check, you're supposed to return a list of integers or array of integers, ठीक है? List of integers or array of integers. Okay, guys, are you listening? Are you following me? सब हो ना? ब्रेक दे देंगे, इसके बाद ब्रेक दे दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, ब्रेक करके आना एंड देन विल डू गुड क्वेश्चंस, ठीक है? सो देखो, find all anagrams, right? You're supposed to find if there is any anagram, ठीक है? If there's any anagram, anagram का मतलब the same string jumbled, correct? If there's any anagram of this inside this, ठीक है? We are not finding the pattern. We are not finding कि ABC उसी pattern में है. It could be possible that बहुत like it could be possible that कि they are jumbled, ठीक है? But they will be of the same size. Do you agree? For example, मतलब तुम चेक कैसे करोगे? दो स्ट्रिंग्स दिया तुम्हें S1 एंड S2, इफ दे आर एनाग्राम्स और नॉट, हाउ डू यू चेक? एक मेथड हो गया, सॉर्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है? एंड चेक इफ इक्वल. करेक्ट गाइस, दैट इज वन ऑफ द मेथड, बट इसमें n log n लग रहा है, करेक्ट? n log n, सो डेफिनेटली नॉट दिस, राइट? दूसरा मेथड है, सोचो कि S1 और S2 का हैश मैप्स ले लो. हैश मैप्स कुड बी फ्रीक्वेंसी मैप्स, है ना? हैश मैप इन द सेंस frequency map. You can use an array also, right? Array like a custom array जो मैं बताया था उस दिन, right? If they are equal, ठीक है, then correct. Equal नहीं है तो equal नहीं है, so इसमें big of n लग रहा है to generate, ठीक है guys? Big of n is the length of the string, correct? Correct. This is how you check. These are the two methods which I taught you guys. Agreed? है ना? तो देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक इसका हैश मैप बना लो, इसका हैश मैप बना लो, पूरा का हैश मैप बना लो. हैश मैप इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस,
यार हैश मैप मत बनाओ, हैश मैप तो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ना तुम लोग को चेक करने में, एनरोल करने में। ठीक है, लेट्स नॉट क्रिएट हैश मैप, लेट्स क्रिएट द फ्रीक्वेंसी मैप। मतलब फ्रीक्वेंसी मैप इन द सेंस वो भी हैश मैप है बट अ कस्टम वन, राइट? तो वो कैसे होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इट इज गोइंग टू बी समथिंग 26 एलिमेंट्स का एरे है, राइट? जिसमें जीरोथ एलिमेंट इज रेफरिंग टू ए, जीरो फर्स्ट एलिमेंट इज रेफरिंग टू बी, सेकंड एलिमेंट इज गोइंग टू रेफर टू सी, थर्ड एलिमेंट इज गोइंग टू रेफर डी। क्यों? क्योंकि हर कैरेक्टर के बाद यू विल बी सबट्रैक्टिंग माइनस ए, correct? Fourth element will going to do something like this. Fifth element is going to do something like this, f, correct? तो वैसे वैसे 26 तक होंगे। एग्रीड? एग्री करते हो मेरे बातों पे, है ना? तो वैसे ही एस के लिए भी बनाना, एस के लिए भी बनाना 26 रो का। अच्छा, कितना टाइम लगता है ये देखने में ये दोनों हैश मैप सेम है कि नहीं? 26 स्टेप्स लगेंगे, राइट? दैट इज कांस्टेंट। एग्रीड? तो देखो गाइस, इसको देखना ध्यान से, ठीक है? तो लाइक आई विल क्रिएट द फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर पी, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। क्या है? 1 में 1 है, बी में 1 है, सी में 1 है, और बाकी सब में जीरोस। कितने लोग एग्री नहीं करते हो मेरे से? कितने लोग एग्री नहीं करते हो मेरे से? दिस इज हाउ द फ्रीक्वेंसी मैप इज, राइट? अगर दो बार ए है तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, एग्रीड? फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू 2 हो जाएगा, करेक्ट? समझ में आ रहा है ना सबको, राइट? अभी मैं, देखो अब ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी मैं लाइक इसका लेंथ देखो 3 है, तो मुझे भी एनाग्राम फाइंड करने के लिए 3 का ही चाहिए, करेक्ट? 3 एलिमेंट्स का ही हैश मैप चाहिए, करेक्ट? Correct, that is anagram, right? You can see that this is an anagram which is of the length 3, correct? So you're supposed to return what is the first index of that particular thing, है ना? ऐसे रिटर्न का लिस्ट बनाना होगा, करेक्ट? एग्रीड? okay, so what I'm saying is guys कि whatever is the length of this particular pattern, p for pattern, ठीक है? The same length of pattern का hash map I need to create in this particular string to check if the anagram is there. I need to create for these 3 values. I need to create for these 3 values. ठीक है? Don't use the word sliding window yet. ठीक है? Sliding window is a fancy term for doing the same thing. ठीक है? So do you think कि मुझे ऐसे 3 3 3 3 करते करते I need to create the hash map? Do you guys agree? So you might be feeling that it is m into n because you're creating the hash map for all the 3 elements again every time. Correct? You might be feeling that. कहाँ तक समझ में आया? देखो मैं बता रहा हूँ कि वी आर क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी array, right, of the same length as p, and you are kind of doing it for these 3 elements, these 3 elements, these 3 elements. इसका like if at all it is matching with these 3 elements, you'll put 1 as the answer. If it is matching with these 3 elements, you'll put this as the answer. You can see that इस element पे match हो रहा है. You'll return 6 as the answer because 6 is the first index. Correct? Yeah, you can use hash map as well. ठीक है? But instead of creating it again and again and again, ठीक है? What I'm going to do is, guys, ध्यान देना, ठीक है? ये स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है बट आई वुड नॉट गोइंग टू यूज। यू आर सपोज टू फाइंड द सम ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है? मतलब ये 3 एलिमेंट्स का, ठीक है? ये 3 एलिमेंट का। तो सोचो 1 + 2 + 3 किया, अगेन 2 + 3 + 4 करना, like don't you think it's that very inefficient guys? देखो 1 + 2 + 3 3 स्टेप लग रहा है, 2 + 3 + 4 3 स्टेप लग रहा है, 3 स्टेप्स लग रहा है, राइट? सो 1 + 2 + 3 में, ठीक है, 3 स्टेप्स बिकॉज वी हैव टेकन द 3 वैल्यू, है ना? इफ यू रिमूव 1 and if you add 4, don't you think you have saved summing up these things again and again? अब समझ लो this size is more, it's like 100, ठीक है?
मतलब समझ लो 100 एलिमेंट्स को सम करना है इन दैट वे, 100, 101, 102 इन दैट वे, ठीक है। तो लाइक यू विल बी समिंग ऑल दीज एलिमेंट्स, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस वैसे वैसे प्लस 100 तक किया, ठीक है, ठीक है। नाउ प्लस 100 तक किया, राइट। नाउ वापस टू फाइंड दीज थिंग्स, ठीक है, दैट इज 2 + 3 प्लस ऐसे 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 करके 101 + 100 करने की जगह, ठीक है, यू कैन सी दैट यू आर परफॉर्मिंग 100 स्टेप्स हियर, यू आर परफॉर्मिंग 100 स्टेप्स हियर। एक बार ये परफॉर्म कर दो, उसके बाद जस्ट -1 एंड ऐड 101, तो ये 1 हट गया, ऐड 101, इट इज द सेम थिंग एज दिस, मतलब 2 स्टेप्स में यू डिड इट, करेक्ट। अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे -2 करो प्लस 102 करो, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो, right? This is a window, you're sliding it, correct, to find the sum right now, but यहाँ पे you're finding the hash map of these 3 elements, ठीक है। तो like to find the hash map of 3 elements, instead of just doing it again from the beginning, if you found out the the frequency map of this, what is the frequency map of this? C का 1 है, B का 1 है, A का 1 है, and it is equal, so 0 का आंसर में रख दिया, right? आगे बढ़ाने के लिए मैं इसको I'll put it inside the hash map and I'll remove C, मतलब C को I'll decrease by 1, अगर वो 0 हो गया तो 0 हो गया, करेक्ट। सो ये तीनों का हैश मैप बन गया ना, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यस्टरडे, करेक्ट। add E, remove C। अब देखो फ्रीक्वेंसी में, अब देखो लाइक आई डिडंट अपडेट फॉर B and A, इट इज सेम, राइट। नाउ इट इज नॉट मैचिंग, तो अगेन डू द सेम थिंग, add B, मतलब B का फ्रीक्वेंसी 2 करो एंड रिमूव B फ्रीक्वेंसी 1 करो, ये तीनों का फ्रीक्वेंसी मैप बन गया, जस्ट 2 स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में। अगेन द सेम थिंग, remove A and add A, same thing, it is not matching, मैच कर रहा हूं कि नहीं हर बार चेक करूंगा, अगेन द सेम थिंग, ऐसे ऐसे करते जाओगे, यू विल बी रीचिंग एट दिस पोजीशन B, 2A and 1B, दैट इज 2A 1B, बाकी सब जीरोस। इस बार यू विल रिमूव A, मतलब A को 1 कर दिया, एंड यू विल ऐड C, तो वापस द स्टेट हैज बिकम द सेम, 1 1 1, so now they are matching, तो फर्स्ट वैल्यू का आई विल बी रिटर्निंग, दैट इज 6, आई विल बी रिटर्निंग। Is this making sense, guys? Hello? This is the concept of sliding window. इसको विंडो बोलते हैं। स्लाइड कर रहा हूं तो एक आगे जा रहा हूं, पीछे वाला छोड़ रहा हूं, एक आगे जा रहा हूं, पीछे वाला छोड़ रहा हूं, राइट। सो आई वांटेडली डिडंट टेल इन अ वेरी क्लियर मैनर यस्टरडे, जिससे तुम लोग खुद से थोड़ा सोचो इसके बारे में, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो डेवलपमेंट होगा माइंड में, है ना। तो इसीलिए पता है नहीं, और मैंने सोचा था कि आज कोड कर दूंगा, ठीक है। नाउ आई विल कोड इट डेफिनेटली, बट यू आर कंपेयरिंग बोथ द हैश मैप्स एट एवरी स्टेप, करेक्ट। सो मैं करके दिखाऊं एक बार कोड, गाइस, ठीक है। अब कोड करते हैं, उसके बाद खाने चले जाएंगे दोनों, ठीक है, एंड देन वी कैन फाइंड ऑल एनाग्राम्स ना, एंड देन वी कैन डू आवर थिंग व्हाटएवर, राइट। तो देखो, एक तो मैं चेक बार बार कर रहा हूं, तो इसके लिए आई क्रिएट अ मेथड कॉल्ड चेक, है ना। तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ मेथड कॉल्ड चेक, जो जो क्या करेगा, इट विल टेक 2 arrays, राइट, s frequency and int p frequency, right, it will check these two and return false or true, ठीक है। प्राइवेट बूलियन रिटर्न करेगा दिस गाय, ठीक है, राइट। अब कैसे चेक करेंगे, यू गाइस आर स्मार्ट, है ना। तो ऐसे कुछ लिख दूंगा गाइस कि 26 तक चलाओ और सेम है कि नहीं वो बताओ एंड ऑल, राइट। सो यू गाइस नो हाउ टू डू इट, राइट। तो सो उसके बाद और क्या क्या कंपोनेंट्स है इस क्वेश्चन में, टेल मी व्हाट आर द कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स। Why taken private? Private because they are from the same class, है ना। So this guy can call this, ठीक है, but I don't want anyone else to call it, ठीक है, which is not like might be making lot of sense to you guys right now, क्योंकि
क्योंकि कोई और है नहीं, तो आई कैन टेक इट एज प्राइवेट ऑल्सो, बट मतलब पब्लिक ऑल्सो, बट प्राइवेट लेना इज बेटर प्रैक्टिस बिकॉज दे आर इन द सेम सोल्यूशन, है ना। तो अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, लेट मी थिंक। तो मैं एक चेक करूंगा, है ना, आर सेम, है ना, आई मीन इस चेक 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 सेम, ठीक है, चेक सेम, राइट। तो देखो अभी मैं लेट मी रन अ लूप फ्रॉम 0 to 26, and if s frequency of I is not equals to p frequency of I, ठीक है, रिटर्न फॉल्स, वरना रिटर्न ट्रू, ठीक है। आफ्टर दिस लूप एंड्स, अब तक फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ मतलब सब सेम है, राइट। सो आई विल रिटर्न ट्रू। क्यों गाइस, इज दिस क्लियर? चेक वाला चेक सेम, आई विल कॉल दिस मेथड नाउ, आई डोंट हैव टू राइट दिस 4 लाइंस अगेन एंड अगेन, ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। तो नाउ लेट मी थिंक अभी कैसे करो। पहले चीज तो आई नीड टू रूल आउट अ केस वेयर p का लेंथ इज ग्रेटर देन s का लेंथ, राइट। सो लेट मी रूल दैट आउट। सी हाउ आई एम बिल्डिंग द सॉल्यूशन, ठीक है, मैं भी पहले बार कर रहा हूँ इसका कोड, ठीक है, ठीक है। आई विल बी रिटर्निंग फॉल्स, नो, आई विल बी रिटर्निंग एम्प्टी लिस्ट ना, तो एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। तो देखो ये जरूरी नहीं कि तुम ऐसे सीक्वेंस में लिखो, तुम पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो, राइट। तो आई विल बी आंसर मार्किंग इट एज आंसर, इट इज नथिंग बट एन array list which is initially 0 negative, so I'll just return that directly, है ना, क्योंकि बड़ा है तो कोई है ही नहीं, राइट, करेक्ट। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, बेस कंडीशन, एग्रीड, है ना। अब देखते हैं क्या है यार, क्या करूं अभी। मैंने ये देख लिया, अभी इसका वो बनाना होगा, है ना, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप बनाना होगा, करेक्ट। इसको फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊं, फ्रीक्वेंसी मैप के लिए आई नीड टू क्रिएट अ array of p frequency which is of the size 26, right, size 26 है, and I need to run through all the characters, let me think कैसे करूं, let me just run through all the values of p dot length and frequency of I, नहीं p dot I, p dot caret, है ना। सो दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर का माइनस ए करूंगा टू गेट द इंडेक्स, आई टोल्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, राइट। क्या ये कोड सही है? क्या ये कोड सही है जनरेटिंग द प्री पी पी का फ्रीक्वेंसी, इज दिस करेक्ट? हाँ, पी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैन बी ऑफ लेंथ p डॉट लेंथ y26। सो ना p frequency क्या करता है, p frequency is an array that is holding 26 letters का frequency, right? So this guy 26 letters का frequency बता रहा है, right? So it's so there could be many letters which are 0, right? But only letters which are actually present in the p string, only they will be having some frequency, right? So it is 26, clear है ना। माइनस ए करूंगा मोहित, इट विल बी माइनस ए, बिकॉज ए का जो एस का वैल्यू 97, ठीक है, और ए का ए माइनस ए इज 0, ठीक है, बी का है 98, सो माइनस 97 इज 1, करेक्ट, इन दैट वे, है ना। तो वो उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी बना दिया मैंने, ठीक है। लेट मी थिंक नाउ कि अभी अभी मुझे लाइक इसका जितना लेंथ है उतना फर्स्ट एलिमेंट्स का आई नीड टू क्रिएट द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो आई विल रिपीट द सेम थिंग, बट अभी p फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं, s फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। एंड p डॉट लेंथी होगा, राइट, बट s फ्रीक्वेंसी में p डॉट लेंथी होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाई, है ना। p डॉट लेंथी क्यों होगा, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई, है ना गाइस, करेक्ट, ठीक है।
So I have created the hash map of these three values and these three values. Now I'll check if they are same or not. तो भाई देखो, अगर if check same, अगर दोनों same है ब्रो, फिर तो मजा आ गया. ठीक है, फिर तो I'll be including the, ठीक है, अगर दोनों सेम है, ठीक है, I will include the first element into the answer. Correct? So it will be a dot answer dot add as 0. 0 को आंसर में डाल दिया. एग्री करते हो कि नहीं? This is exactly what it is. Correct? इसको like first elements का same match हो गया, तो first index that is 0 को add करना है. एग्री करते हो कि नहीं guys? Now comes the magic, जहाँ पे हम we are including a character and then removing another character, right? So let me just do that magic. Magic करने के लिए क्या करना है मुझे? I need to start from where? अरे यार, ये बार-बार ये frequency length, I don't like this, man. Let me just create these things here only. Now let me just do this thing. If n is greater than f, right? Do this and should be n here क्योंकि p dot length है. Should be n here, p dot length है. Right now, p dot length. Now let me think, guys. So I need to start it from here, na? See this, Baba, है ना? So इसका length 3 है, right? So I need to start from 1, 2, 3 from this particular point, na? I need to include this point and I need to remove this point, which is p length पीछे, p length back towards it. Agreed? Guys, मानते हो कि नहीं यार? बताओ. I'll start doing it from here and I'll remove this thing which is at a distance of p. Correct? So let me just write the code, man. तो p मतलब n है ना? So let me just write int of I equals to n and let it this guy run for m. M is the actual length of this particular thing. ठीक है? इसका लेंथ है n, इसका लेंथ है m, right? तो यहाँ तक ये from here whatever is the length and from there you will be running, right? You will be including e now by kicking out c. How to kick out c? Whatever is at a distance of n, you will be kicking that out. Correct? So एक बार देखना, you guys will understand. ठीक है? तो देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है s फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करना है, राइट? s फ्रीक्वेंसी में अब देखो ध्यान से कि s डॉट कैरेट i जो है, right? So this value I'll be adding it. Correct? I'll be adding into the hash map. I'm adding e to the hash map. देखो hash map is made of these three values. Now I'm adding e to the hash map, right? Into the hash map I need to remove c which is at a distance of n. तो I minus n करूंगा मैं, right? So I'll just write the same thing. I minus n minus a, that is common. I'll do minus of this. Minus of this. I'm decrementing it. I'm removing its frequency. Line 6 have extra parenthesis. Explain line number 18. देखो line number 18 में देखो this is the answer, right? Answer is a list. I'm adding my 0 into the answer because if at all they are same in the initial phase, it means that like this is the first index, correct? This is the first index where from where it is same, है ना? So I'm including 0 where it is same.
चंचल, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ अगर समझ नहीं आया तो एक बार। एनीवन, अभिनव? एक बार हैंड रेस करना। क्लियर अभिनव? यू वांट टू गेट अनम्यूटेड? सी ब्रो, like e जो है, like from here I'm starting iteration, from n I'm starting, n is nothing but p का length, है ना? मतलब from here I'm starting iteration, I'm including that into the frequency map of s, and I'm removing I minus n. I minus n मतलब 3 minus 3, that is 0. मतलब c को मैं हटा रहा हूँ. Now my frequency map is of these three elements, right? Now I'll check क्या at this position ये दोनों सेम है? अगर सेम है, if check same, if s frequency and p frequency are they same, if they are same, okay, now I'll be adding I minus n into the answer because that is the index, right? So if at all this is same, if at all BAE is also anagram of this, I'll be adding this particular thing, right? That is यहाँ पे जो भी है minus that plus one शायद, है ना? No, because minus n is this one, plus one I need to do. I need to include this into the answer. Correct? 11, 15 lines, do it in normal way. अरे normal way करने में क्या है bro? Like implementation का तो you guys shouldn't be asking by now, ठीक है? वो तो बहुत simple हो जाता है, right? You just need to do the hm dot put वाला scene, है ना? Now focus on the logic. Now it is about logic building now, ठीक है? Implementation you can do it easily, ठीक है? थोड़ा हाथ पैर मारो हो जाएगा, right? So देखो I'm adding this thing, बस इतना ही यार कोड, मतलब शायद इतना ही होना चाहिए, और कुछ होगा क्या? हेलो या हाय। सर। सर ये हमको जानना था सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं लाइन नंबर 17 में कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं, सेम है, फ्रीक्वेंसी मैप्स। ये सर वही मीन्स मैप अगर सेम है तो ये 0 ऐड हो जाएगा। और उसके बाद सर जब नेक्स्ट लूप हम चला रहे हैं उसमें हम एक इंक्रीज कर रहे हैं एस वाली फ्रीक्वेंसी में और डिक्रीज कर रहे हैं सर, एक मतलब राइट और लेफ्ट से। बट एक सर इंक्रीज कर रहा है, और एक डिक्रीज। डिक्रीज सी से कर रहा है ना? यस सर, यस सी सर, को हटा रहा है ना? यस सर। जो भी एन डिस्टेंस, मतलब जो एन डिस्टेंस पीछे है ना, उसको हटा रहा है। ओके सर, बट सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमने मान लीजिए ऊपर फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए कैलकुलेट पहले ही कर ली है और वो इक्वल नहीं थी। सपोज कि ऊपर वाला जो हमारा पी की हाँ, नहीं ये फ्रीक्वेंसी तो है ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं तो, होगा। बट सर उसमें दूसरे वाले में तो सर पहले से ही सब में कैलकुलेट हो चुकी है हर एलिमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी। तो हाँ, सर ये सो दिक्कत नहीं होगा? क्या दिक्कत है बताओ एक और बार। मतलब लाइक सर जैसे सर जैसे कि हम लोगों ने एस की भी फ्रीक्वेंसी सभी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर ली है। सभी एलिमेंट के लिए नहीं किया ना, ओनली दीज थ्री एलिमेंट्स के लिए किया ना। ये देखो ना, ओके सर, एन ओके ओके एन सर, ओके सर, ओके सर, गॉट इट, है ना? ओके सर। लाइन नंबर 23 एंड 24 में देखो, लाइक एट एवरी पॉइंट, ठीक है, आफ्टर एवरी स्टेप, ठीक है, सो इन ईच आइटरेशन आई एम क्रिएटिंग अ न्यू, लाइक इन ईच आइटरेशन आई एम क्रिएटिंग hash map of these three elements. In the next iteration I'll be creating hash map of these three elements, right? So I'm just checking कि frequency, s frequency and p frequency दोनों same है कि नहीं every time, right? Because p frequency is constant and this is the one who is varying. अगर same है, ठीक है, if at all they are same, right, then I'm adding I minus n plus 1 because I is the value that you are added, ठीक है, minus n करूंगा that is the value you have removed, ठीक है, plus 1 करूंगा that is the value that is the starting of the sub array that you have chosen for the hash map, correct? तो देखो, like I can do this, ठीक है, so let me just run the code if it is working or not. It is illegal start of the expression, okay, square bracket. तो देखो गाइस, लाइक फॉर एग्जांपल इसके लिए करूं मैं ट्राई रन, ठीक है, तो मैं ए बी इज एस, दिस गाइस हैविंग द पी का वैल्यू है ए बी, राइट, दिस गाइस हैविंग 0 and 1,
राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इसका फ्रीक्वेंसी मैप होगा, लाइक इसका फ्रीक्वेंसी मैप ये होने वाला है 1 1, राइट, 0 1 2, बाकी सब में जीरोस, करेक्ट है ना। दिस इज पी फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। एंड एस फ्रीक्वेंसी में यू हैव, एस फ्रीक्वेंसी में लाइक यू विल क्रिएट फॉर फर्स्ट टू एलिमेंट्स ओनली, ठीक है, यू नो दैट हाउ आई एन एन का ही बना रहा हूँ, राइट। So it will be 1, 1, right? Everything is 0. Now they are matching. So you'll add 0 into the answer. Okay, you have added 0 into the answer. Now I'll be like, I will be running from here, from this index, that is 2, from wherever this length is. I'll be including I, मतलब इसको plus plus कर दिया, मतलब 2 हो गया है. Now I'll be removing I minus n. I minus n मतलब 2 minus 2, that is I. Again I'm removing this. It will be 1 again. So you have created a hash map of these two elements, right? Again, it is 1, 1. Again, you have checked, it is working. So I minus 2, I minus n, that is 2, plus 1, that is this position. So you'll be including 1 because this is the starting of this particular subarray, right? Now again the same thing. For the next index, I equals to 3. ठीक है, इसके लिए b का frequency is becoming 2 and you are subtracting 3 minus 2. 3 minus 2 मतलब ith index का, मतलब b का I'm subtracting. Again I'm making it 1. Again I'm checking if they are same. Yes, they are same, right? So they are same. AB is same, right? So AB is same with this. So I'll include 3 minus 2 plus 1, that is this particular value 2. So देखो आंसर। यार ये चीज ना, मतलब इसमें लाइक यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ठीक है। अभी मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो लाइक एट दिस पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे लाइक ऑल दिस थिंग्स इज फॉर द इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ द साइज p डॉट लेंथ। यहाँ पे योर दिस इज इंक्लूडिंग नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। नाउ excluding first element, right, and checking if same, right. So at every point you'll check, right, because you're moving that window so that you're checking if the frequency maps are same or not. If they are same, then include that index. If they are not same, don't include that index, right. तुम लोग को कंफ्यूजन इसी में होगा कि i माइनस एन कैसे ले लिया, i माइनस एन प्लस 1 ले लिया। तो ये चीज ना थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा तुम लोग, क्योंकि i माइनस 1 मीन्स दैट कि फर्स्ट एलिमेंट है, I is the current element you are dealing. I minus 1 plus 1 is the element that you are trying to I minus 1 plus 1 is the element that you are trying to like that is the first element of the subarray of which the hash map is being created, ठीक है। इसको हटा रहा है तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट ही तो होगा फर्स्ट एलिमेंट। थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम लोग को इसके बारे में। लेट मी सबमिट इट एंड चेक इफ इट इज वर्किंग। ओके ग्रेट, फर्स्ट टाइम में चल गया, राइट। सो इट इज वर्किंग, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो मतलब एक विंडो, मतलब सेम साइज का एक contiguous element, you're sliding it, matlab you're including it, you're excluding it, right, so that you're getting the hash map of this. Again you're including it, you're excluding it, right, you're getting the hash map of this, ठीक है। in this way you're doing, guys, ठीक है। तो थोड़ा सोचो, ठीक है। we'll have a lunch break, I mean क्या ब्रेक है वो, डिनर ब्रेक, ठीक है। इसके बाद we'll come back and we can solve any other question of your choice, ठीक है। let's not introduce any, like we can solve this question, right, or any other question of your choice, ठीक है। and then if it is possible, then we can get started with the prefix sum or such type of questions, ठीक है। cool, I'll share the code, no worries, ठीक है। I'll put the code in the module 3। मैं बताता हूँ प्रीफिक्स सम क्या है, मैं बताता हूँ। आज का डेट 7 है ना।
ओके ग्रेट, जो भी करना है यार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विल डू, ठीक है। चलो मैन, विल हैव अ ब्रेक। अब देखो 9:50 हो गया, तो विल बी बैक एट 10 टू 10 ना, 10 पे वी कैन बी बैक, ठीक है। चलो 20 मिनट ब्रेक, इट्स नेसेसरी। कुल थोड़ा सोचो इसके बारे में, अगर जिसको भी अभी भी समझ नहीं आया, लाइक थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है, यू कैन डू इट, ठीक है। हैव अ गुड डिनर, बाय बाय। हाँ कल कॉन्टेस्ट है, ठीक है, फिर विल स्टार्ट द प्रीफिक्स सम एट द एंड, ठीक है, हम हैशिंग ही करेंगे, ठीक है।
Hi guys. Hello, I'm back. I hope you guys are back as well. Is your done? Is your dinner done? Hello. Arrays dot equal. हाँ, देख लो यार, मोहित करके देखना एक बार. हो रहा है तो हो रहा है, अच्छी बात है. लाइक नहीं हो जाएगा मोस्टली. हाँ, arrays तो इक्वल ही है ना. हो जाएगा. It will be done, yeah. Great man, great. ठीक है, so I hope you guys like who didn't go for the for the food utilize this time well. Take what question you want to do next. Shall we do this question, guys? Right. Can you name that question, Abhishek? What question is that? ठीक है. Let me just see. Find repeating and missing number. What? क्या क्वेश्चन क्या है? मैंने नहीं पढ़ा. कोई समझा सकता है क्या मुझे क्वेश्चन? You are given an array of nums. अच्छा, consisting of n positive integers. Okay, first 10 positive integers. Oh, मतलब 1 2 3 ऐसे. But from n integers, one of the integer occurred twice in the array and one of them is missing. You need to determine the repeating and missing in what? Is this even a question, guys? Come on, यार. क्या बोल रहे हो यार? See, question ये है कि 1 2 3 4 4 5. ठीक है, तो you are given an array where 4 occur twice and 6 is missing. तो क्या प्रिंट करना है? तो यहाँ पे 4 दो बार हुआ तो 4 को एक बार प्रिंट करना होगा और 6 एक बार प्रिंट करना होगा. अब बताओ कैसे करते गाइस, बताओ. वही है ना, n का array ले लो यार. Like take an array of size n. ठीक है, and like n ले लो या n plus 1 ले लो if you don't want to do anything with the code. ठीक है, तो 10 है, समझ लो 10 तक ले लिया. तो 1 to 10 तक just check कि if there's any guy who's having the frequency 2, print that index, or if there any guy who's having the frequency 0, print that index. हो गया काम खत्म. Is this even a question? Hello. समझ में आ गया ना क्वेश्चन? Longest sequence with difference 1. Okay, so you guys know what's the difference between subsequence, right? Like subsequence and substring, right? So is this a yeah, we'll do that, Sagar. करते हैं एक बार, ठीक है, but एक बार देखने दो क्या क्वेश्चन है. You're given an array. Your task is to find the length of the longest subsequence of a num such that the absolute difference between any adjacent element in the subsequence is 1. Okay. So like subsequence का मतलब है कि I think it's a dynamic programming question. ये कौन सा कैटेगरी में है? Like this can be done, man. This can be easily done. मतलब इसको dynamic programming सीखना होगा. Like मतलब you need to choose कि if you need to choose this particular thing or not. Like you will be learning this thing later. ठीक है? So you'll be choosing कि if this particular element should be there or not, right? With a difference 1. Okay, you can do +1 or -1. You'll be exhausting all the possibilities to check which is the longest one. ठीक है? So उस तरह से करना होगा. So is this in the assignment? Hello? Okay, so let me just see that. If at all this is present in assignment. Which assignment was that? Hashing? Bro, hashing रुको ना. Like hashing and prefix ना. Okay. So let me just make you guys comfortable with these things. Okay. So this question is also smallest in the category all characters of other string. So these things are kind of mixed questions of prefix and hashing, right? So let me introduce the concept of prefix for you guys. Okay. And then let's see how we can do this question. Okay.
So for that you guys, I need to introduce this topic. So wait, like this is actually this assignment is given to you uh, to be done after the class, okay, after today's class, okay. So is there anything you want to discuss in hashing before we move to the prefix sum is my question. Okay, yeah, that's what, man. You try it on your own, na, first. Okay, so just try to explore. मैंने तो DP का एक solution सोचा था, and let me think of using hashing or something. Okay, so we'll see that. Okay, तो एक बार try करो. Okay, but let's discuss this thing before that. Okay, let's discuss this question. This is one of the, like, this is not present in my in assignments or anywhere. Okay, so let's do this. Okay, we'll do prefix sum tomorrow. It's fine, but like today, like if you want me to do, then we can give you an introduction to prefix sum, okay, so that you guys you can think of some way. Okay, so guys, this is another question, man. This is also another variation of that question, right? So can you guys think of this thing? This question from yesterday's assignment. Okay, subarrays with distinct integers. Okay, we'll do that. एक बार इसको इसके बारे में एक बार सोचना. Try to think about this question. I also made you guys to think about this question, but today we'll code it. ठीक है? Like एक बार सोचो इसके बारे में. Like think about this question if you guys can do. Think. Yeah, it was done yesterday, but not for the other people, all the people, I guess, right? So I think it's better if we discuss it once. See, like this question is similar. This is an extension of subarray with sum 0. Okay, this is an extension of that. Okay, there you are just finding sum 0. इसका मतलब you're just trying to find the same sum if it is present in the same array or not. Okay, यहाँ पे you are supposed to find that subarray with the k as the sum. Okay, so I think I've showed you an analogy yesterday. I think I've showed you an analogy yesterday of how if at all you found a sum 1, okay, how if at all you found sum 2, okay, at every time you find a sum 2, you'll be checking ki sum 2 minus k is present or not, okay, because like you're just trying to find a subarray. Like if you subtract k from this particular sum, then if there is some sum that is present inside your hash map, then this part is nothing but k, right? So how many number of times such sum 1 is present, that many k's are present, right? If at all there's another sum 1 here, so even here there's another k subarray, right? This is subarray of k size. So that is the whole logic, right? So you'll keep on like every prefix sum that you generate, you'll be putting it into a hash map, okay, against its frequency, okay, and every time you generate, you'll be checking if sum 2 minus k is present or not. If it is present, it means that like there is a point where someone is present. So from that point till now, you have a subarray of size k, right? And अगर ये सीन है, सम अगर है, तो how many are there? So you're supposed to return number of subarrays right now. So it's not similar to the question like before ki you're just finding the longest. यहाँ पे number of subarrays you are supposed to find. Number of subarrays with size k. Not size है, it's with some k. तो इसके लिए you need to use frequency. एक बार सोचो क्यों? Repeat from the starting. Okay, रुको यार, फिर start करते रहो उसको. I thought कि we'll quickly do it and move ahead, but ठीक है.
Cool. So see guys, you're supposed to return number of subarrays with some k. Right? So you're supposed to return number of subarrays with some k. ठीक है, पहला अप्रोच ये होने वाला, generate all the subarrays, right? How do you do it? Using two loops, है ना? And find subarray with k sum. Correct, guys? So this is similar to what we were doing there, right? Using I from 0 to n, right? Internally, you'll be using another j 0 to like I to n, and you'll be using a sum, right? And you'll be adding the sum, right? And you'll be checking if sum is equals to k. Hai, this is a method. Correct, guys? Now, okay, guys, I've started. Okay, cool. This is the first method. This is a brute force. Okay. तो उसके बाद the optimized next optimized thing is कि similar to how we have found the sum subarray with the sum 0. Similarly, you'll be doing it for here. Okay. Similarly, you will be just checking if like you will be generating a prefix sum only again. I mean prefix sum matlab if you have an array like this कि ये एलिमेंट का सम क्या है, ये दोनों को मिला के सम क्या है, ये दो like what is the sum of these 3 elements, what is the sum of these 4 elements, right? And what is the sum of these 5 elements? In that way you'll keep on summing them up. Okay, what is the sum of all these elements, right? In this way you'll sum up, right? And you'll store it in the hash map, right? So let me take an example, it will be much clear. Okay, 1 2 3. Okay, let's check this. Okay, so if you have 1 2 3 and the k value is given as k equals to this one, right? So so like what is the prefix sum? Like first is 1, right? So I'll just mark 1 as 1 is occurring one time. Now the key value pair is not index but the frequency. Take a number of subarrays, right? This is the prefix sum. I mean prefix sum matlab just starting element se last tak, right? And this is the frequency of that. Okay, 1 is occurring one time. You can see that next value is 3. 3 is occurring one time. Next value is 6. 6 is occurring one time, right? In this way, you'll create a hash map, right? But while putting it into the hash map, you'll just check if that sum, जैसे 6 हो गया, 6 minus 3, है ना? Sum minus k, right? Sum minus k if it is present in the hash map or not. Okay, you can see that 6 minus 3 is 3. 3 is present in the hash map, correct? मतलब 3 hash map में present है. इसका मतलब है from that position till now, मतलब इस position पे, like at this position it is there, right? From this position till now, whatever the value is, that is the value k. It's not 0. 0 की तरह we are not checking कि the same sum is present or not. We are now checking कि sum minus k is present or not. If sum minus k is present, it means that extra part जो भी add किया, that is the value k. The subarray is having the value k. Got it? एक बार सोचो इसके बारे में. और frequency क्यों use कर रहे हैं एक बार सोचो. I'll give you 1 minute time. Like, can you try to find the like how similar the previous question and this question is? Try to think. मैं एक बार म्यूट हो जाता हूँ, ठीक है? 1 मिनट के लिए सोचो इसके बारे में.
guys, same question in the previous. We can imagine k was 0. Correct, Arundhati, correct, right, Faiz, correct. So so this question is an extension of the previous question where k is 0. Correct, guys? Right. So what I'm saying is कि like I'll show it to you mathematically. ठीक है? Mathematically दिखाऊं तो you have elements in this way, right? So you have these elements, this element, this element, this element, this element, this element. Like for example, if you encountered some value like sum, right? You will be checking if sum minus k is present or not. hm dot contains key. क्योंकि every sum you found, you're just putting it into a hash map. You'll just check if it is present or not. If it is present, इसका मतलब कि समझ लो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है. ये जो चीज है ना, दैट इज के, है ना. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि सम माइनस के इज प्रेजेंट इज एक्स. इसका मतलब है सम माइनस एक्स इक्वल्स टू के. कैन यू सी कि डिफरेंस इज के, राइट गाइस? है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, राइट? सो you just check if it is present or not. If it is present, just how many times it is present, ठीक है? So that many times you'll add. If at all, मतलब frequent, again यहाँ पे भी present है. You can see, you can understand this is also having the frequency like some k. This is also some k, right? ये दोनों k है, right? So you'll just add 2 as the 2 subarrays as the value k, correct? करेक्ट. तो लाइक गाइस, एक बार बताने ये कितना क्लियर है. लाइक मतलब कॉन्सेप्ट बताओ, मतलब कैसे कोड करना. नहीं, लाइक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू आर फाइंडिंग द सबअरे sum to be k, is that clear for everyone? Let me just launch the poll again. ठीक है, let me launch the poll. This not for 0 subarray, this is for this. Only the logic of how you are subtracting sum से k subtract करके how many times, how many like how you're finding the subarrays with the sum k, how much is that clear? I want to know that. देख, जो भी partially mark करा है, I'm assuming कि like it will be clear completely the moment I complete the solution. But right now I'm calculating every sum, I'm putting every sum into the hash map, and I'm seeing कि at every point कि sum minus k कहीं है क्या. अगर है तो कितने बार है, उतने बार we have the subarrays with the sum k, right? So I'll just add that into the answer. ऐसे सोच रहा हूं मैं. ठीक है, cool. The results are good. ठीक है. So guys, just wait. ठीक है, तो देखो what I'm doing is I'm calculating the prefix sum at every point. मतलब इसका sum find करूंगा, इसका sum find करूंगा, इसका sum find करूंगा, इसका sum, सबको मैं hash map पे डाल रहा हूँ. ठीक है, hash map against its frequency, कितने बार आया, right? तो ये sum यहाँ भी आ सकता है. इसका मतलब all these things are 0, but it won't make any difference, right? Now we are not searching for 0, we are searching for k, right? So I'll just code it down for you. ठीक है, I think it will be much clear if I code it down, right? So देखो, so let me just get the length. ठीक है, now what I'm saying is I'll be maintaining a hash map to save them, right? Right, so I've created a hash map. Now let me create a variable called answer, which will be storing the number of subarrays with the sum k. ठीक है, this is an answer. ठीक है, and I'll be and I'll be maintaining one variable called sum, which is basically the sum, prefix sum. ठीक है, जो मैं पहले कर रहा था, right? No difference.
Now let me just iterate through the to this code, and let me create the sum of numbers of I. Right? So socho, like this is what I made, है ना? Now sum, ठीक है? So इस sum को I should be putting it into the map. बस यही बताया ना तुम लोग को, right? So sum and mp dot get or default, because I'm trying to maintain a frequency map, right? So get or default sum comma and +1, right? So in this way I'm creating a function. Okay, so this is the function, guys. This is a function to create a hash map, है ना? तो यहाँ पे भी the previous question, इस question में कौन सा question है वो? Where is that question, man? The question we were discussing earlier. This question, right? So here यहाँ पे जैसे plus करना है ना, you will be doing the same thing. What did I do? Right? So यहाँ पे जैसे plus हो रहा है ना, the same thing, the plus only I'm doing it in this way. Do you guys agree with me? कि how am I doing? +1. Right? Whatever is the get value, I'm just taking it and doing +1 to it. अगर वो exist नहीं करता, then it will return a 0 value, and पहली बार I'm putting the value against 1. Correct? है ना? So देखो, बस इतना ही है. I'm pushing all the sum into the hash map every time a new sum is being pushed into the hash map, right? And after that, ठीक है? After I push that sum, I'm just checking कि if mp dot contains ठीक है, I'm just comparing कि if that sum is present or not. ठीक है, if that sum is present or not, I will be doing it like this is the code for the to find the sum to find the subarrays with the k equals to 0, matlab with the sum 0, right? But right now I won't be finding the same sum. I should be finding sum minus k, right? So I'll be finding sum minus k now. क्योंकि sum minus k है, इसका मतलब है कि from that position to now the number of subarrays is k, correct? मतलब the subarray sum is k, correct? So जितने हैं उतने हैं, like जितने हैं उतने subarrays भी है, right? With the sum k. So I'll just add answer में mp dot get sum minus k. Cool. Guys, देखो how clear is this? How much clear is this? Right? But here we are talking about the frequency, na? We are seeing कि how many number of subarrays are there. ठीक है? There could be a question formed कि number of subarrays, written the number of subarrays with sum 0, right? At that time you will be creating a hash map with the frequency in it. It's not index now. ठीक है? Longest के लिए you will be storing the prefix sum against the index, है ना? Longest के लिए. Now you will not be storing index, you will be storing the frequency, because you are supposed to find the number of subarrays, correct? So how many number of subarrays are present, that many number of these like that many number of subarrays will the sum 0 will be there. सोचो इसके बारे में एक बार. You need to think. Yeah, I'll write on it, don't worry. तो ये कोड है गाइस, लेकिन एक बेस केस में मिस कर रहा हूँ, ठीक है? तो I'll tell you that, ठीक है? But let me just take this example and it will be let me explain you. K3 है, ठीक है? So I am finding the sum initially 0 है, right? I am here, sum को 1 कर दिया, right? And in the hash map I am putting 1 against 1. 1 minus 3, I'll be just checking 1 minus 3 is present, मतलब -2 present, no, not there. So I'll just move ahead. ठीक है, आंसर 0 ही है. यहाँ पे आया sum is 3, so 3 against 1, right? Correct. So 3 against 1, so nothing happens. 3 minus 3 is 0, 0 is not present, right? तो मेरे हिसाब से 0 भी present करना चाहिए हमको. एक बार सोचो इसके बारे में. Sum is 3,
it means that this is 3 and 3 is exactly what we are searching for. So don't you think we should include this as well, similar to where we are doing some, है ना? So I think this is the case I'm missing. एक बार can anyone confirm? यही कर रहा हूँ मैं, यही गलत कर रहा हूँ. Like I should be checking if sum is equals to k, right? It means that अगर sum k है, right? It means that I need to do answer plus plus na, because this particular sum, like it can't be it can't be checked from the map, right? Even though I add it in the map, but it's similar to that na, where sum is k 0. At that time you're marking the longest as that only, because this is not present. This is the only case that is left in the hash map, right? If at all the prefix sum is only 0, correct? In line 10, okay, we are doing this thing in line 10. Sorry, acha, you mean to do this one? See, okay. In the line two, we should, so see, if at all this thing is present, okay, I told you, right? So if at all this is present once, okay, just a second, where is that diagram? Where is the diagram, man? Sorry. Yeah. So here, guys, this is what I was explaining. See, if it is present once, okay, then I can do plus plus. But right now, it can be present multiple times. Na someone, so मतलब ये सब zero भी हो सकता है ना. So it could be present multiple times. Na someone in that way, right? So if at all it is present multiple times, so that many number of k is also present, right? That many number of subarrays with the sum k is also present, right? तो इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, लाइक जितने हैं उतने बार k भी होगा करके. See, if at all sum 1 is present, like this sum 2 minus k is present 3 times in the array, well 3 times in the sense with against the frequency of 3, something like this. It means that it is present 3 times. Matlab at the ending of this thing, it is present 3 times. Matlab 3 times you can create a value k with the value k from sum 1 till sum 2, the value is k. 3 times you can do that. Agreed, guys? इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ यार, इसीलिए आई एम नॉट डूइंग आंसर प्लस प्लस. या सो लेट मी डू इट. ठीक है, तो ये हो गया, राइट? सो आई वाज रनिंग, आई एम सॉरी, पूरा हट गया. सम 0 था, 1 हो गया, 3 हो गया, आंसर इज 1 right now. From 0 it became 1 because of this condition, correct? And in the hash map we have 1 2, right? And then comes 3, right? 3 के लिए it will be 6. ठीक है, 6 minus k, that is 3. ठीक है, is 3 present? Yes, 3 is present. मतलब 3 is present, मतलब यहां तक 3 है, right? And now you are 6. ठीक है, मतलब like from that position till this position the subarray is having the sum k, correct? So how many 3 is present? You can see that only 1 3 is present, right? So we'll just add that into the answer because this is the only subarray that is having the sum 3, right? So this is another subarray, right? So both of them, including both of them, it is 2. Q, guys. So I'll be just at the end return the answer as return the answer. So थोड़ा टाइम लगेगा because this is not straightforward the same question, है ना? For fourth and fifth element, okay. ठीक है, तो एक और बार let me create another case here. ठीक है, let me create another case. So 1 हो गया, 3 हो गया, this is 3, right? I can create some -3 here, right? And I can create some value like any value like 7, right? And some value like -1, right? ठीक है, तो देखो let me do this. ठीक है, sum is 0, answer is 0, hash map is empty. Start करता है. Sum becomes 1 against k का value 3 है. ठीक है, 1 against 1, right? You'll reach here,
it will be 2. I mean, sorry, it will be 3 and 3 against 1, right? You can see that 3 sum is 3, right? So the same sum, since the sum is 3, so I'll make the answer as 1 because it is equal to k, this particular thing, correct? Now it will be this particular thing, that is 6. Okay, and you can see that 6 minus 3, right? That is 3. 3 is already present here, correct guys? 3 is already present here, right? So अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने बार present है उतने बार I'll add it to the answer because this particular subarray is a k, correct? This is a k subarray, this is a k subarray, 2 बार हुआ. So now comes -3. ठीक है, -3 मतलब 3 आ गया वापस, ठीक है? Now you can see that again it is equals to k value, correct? So I'll just add this thing. Okay, I'll just add this thing because this whole subarray is another subarray with the sum k, but also I'll sum this here because the next time the same thing comes. Next time वापस 3 आया, at that time like अगर समझ लो ये -4 है, again in that time, at that time I can easily get that this is also another answer, right? तो देखो, now I'm at 7. 7 is 10, ठीक है? And I'll just mark 10 as 1 because 10 minus 3, 7 is not present in this particular thing, right? And then comes -4. You can see that वापस 6 आया. 6 minus 3 is 3, is already present. So you'll add 2 times here. 2 because 3 is 2 बार है. Like this is 1 3 and this is another 3, right? So this part is k and this part is also k, correct? So you'll add, so 5 will be the answer for this particular example because कि देखो 3 कितने बार है? 3 2 बार है ना, right? This is one of the 3 and this is another 3, right? So at this position, ठीक है, that many number of subarrays will form with the sum as k also, right? ये like you can see that 7 comma -4 is also 3, right? And 7 comma -4 comma 3 comma -3 is also another subarray, correct? So like it could be present multiple times, right? So if at all it is multiple times present, then multiple subarrays with the sum k will be formed. Agreed? Right? Yeah, we can do that, Nirank. Like instead of just using doing this thing, we can do something like 0 ko 1 ki tarah ek baar I can put it inside my hash map, right? And I can just subtract it again and again from it only. Cool. Guys, is this understood? थोड़ा time लगेगा like to understand this. Like I'm not expecting you to understand in the first go only. Like to the people who didn't understand, it's cool. Okay, you'll understand it eventually. Right, let me just check if it is working. Yeah, it is working, right? Great. Correct. Hello. Right. So shall we move to the next? हाँ चंचल थोड़ा time लगेगा तुम्हें, ठीक है? Try to like इससे better like I've taken a great example, ठीक है? But taking such huge example is also a kind of negative thing because that will add a lot of complexity to your understanding. ठीक है? Right now ऐसे समझ लो कि you're maintaining a hash map with the prefix sum against its frequency, the number of occurrence, right? So if you do that, if you do plus plus, okay, it will fail. It will give us a wrong answer because it won't consider many of the possibilities, right? So if at all you do plus plus only, like here for this example, see, sum is 3 times, right? Sum is present 3 times, correct? Sum is present 3 times. So 3 subarrays with the sum k will be formed. Okay, so if you do plus plus, then that's definitely give you wrong answer, correct? क्योंकि k एक ही generate होगा, लेकिन if you actually add its frequency, then the number of k's will be more, correct?
हाय चंचल। उदय, आप 1 मिनट कोड पे जाएंगे? Why you are adding this mp dot get sum minus k in answer? हाँ, तो यही तो समझा रहा था अब तक, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव मी द फ्रीक्वेंसी of number of times sum minus k is there. Agreed? Okay. So what are we storing in the hash map? We are storing ki kitne baar the same prefix is occurred, correct? So while dry running also I was showing you the same thing कि sum minus k कितने बार occur हो रहा है, उतने बार k भी तो occur होगा. Yes. So ultimately we are just counting that how many times 3 is coming in while doing sum, right? 3 नहीं, देखो ये sum है, समझ लो ब्रो, ठीक है। Okay. लेकिन in your hash map sum minus k is 3 times, मतलब 3 times it is present, मतलब 1 it is here, 1 it is here, again we uncounted it here. Okay. So don't you think कि यहाँ पे एक k बनेगा, यहाँ पे भी एक k बनेगा, यहाँ पे भी एक k बनेगा. So 3 Yes. subarrays are formed, right? Yes. So for that reason I'm adding it. कि the number of times this is present, the same number of times the subarray with the sum k will be present. So ultimately it is counting, na? It is counting the number of times the subarray could be possible with the sum k. Okay. So for example frequency अगर 3 है और काउंट अगर हमें 1 करना है तो वो तो 3 को ऐड कर देगा ना? हाँ, 3 को ऐड करेगा. तो ये काउंट गलत 1 काउंटिंग नहीं हो जाएगी? नहीं, गलत कैसे हो रहा है, देखो ना. दिस इज अनदर सबअरे व्हिच इज हैविंग द सम k. दिस इज आल्सो सबअरे दैट इज हैविंग द सम k. दिस इज आल्सो सबअरे दैट इज हैविंग द सम k. तो 3 ऐड होना चाहिए ना. ओके समझ में आ गया मुझे, है ना. द नंबर ऑफ टाइम्स दिस इज प्रेजेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स k विल आल्सो बी प्रेजेंट. ओके. तो सोचो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट यू गाइस विल जस्ट स्ट्रगल अ लिटिल. ओके. So how to compare two hash maps? Yeah, that will compare. Correct. I told this thing yesterday only. मैं बताया था how to compare two hash maps. ठीक है, equals method है ना. So this will compare any two objects. ठीक है, चंचल, cool. Guys, next question करें. Next question. Subarray with distinct, अच्छा, distinct integers. एक बार देखते हैं यार. Let me just see this question. Guys, to understand this question, you need to understand one more question, okay, which I'll tell you. With distinct, just a second. Is this question? Achha. At most, exactly. Let me just see if I have this on lead code. No, so let me have it in TFG. At most k distinct values. Yeah, I understand, Chanchal. So there go, guys. I'll try to do that, and I'll try to see that. So we'll discuss for 10 more minutes. This is the last question, and then you guys can leave. Okay. So देख लो, एक बार ध्यान देना. Use your last bit of focus here. Okay. Guys, shall we do? Hello. This is Josh. Hi. Till now. करना है यार. You're doing it for you, right? It will pay off. Everything will pay off, right? Like you guys are sitting like around 200 बच्चे में से 113 बच्चे are left, right? Your dedication will pay off someday. Trust me. ठीक है.
चलो देखो, क्वेश्चन ये है, you are given an array, right? Your task is to count the number of subarray that have at the most k distinct values. ठीक है, at the most, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में दिस क्वेश्चन आल्सो, लाइक आई वोंट से कि दिस इज अ इजी क्वेश्चन, ये मीडियम क्वेश्चन में आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ सब एरेज। देखो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आवर व्हाट आवर पोर्टल में क्वेश्चन है, बट टू अंडरस्टैंड का पोर्टल क्वेश्चन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, दिस इज द इजियर क्वेश्चन देन दैट। नंबर ऑफ सब एरेज विथ एट द मोस्ट के डिफरेंट वैल्यूज, है ना? अच्छा, के डिफरेंट वैल्यूज कैसे पता चलेगा यार, बताओ एक बार मुझे। लाइक मेरे हिसाब से लाइक यूनिकनेस फाइंड करना है। ठीक है, I say something like this. So what are the number of values here? Number of distinct values here, guys? 3, na? So don't you think if I create a hash map of this, okay, it will be 3, 2 will be 2, 3 will be 1. Can I say the size of the hash map is nothing but number of distinct elements? एक बार सोचो guys इसके बारे में। The question is कि you are supposed to tell me the number of subarrays with at most k different values. ठीक है, at most, ठीक है। तो अभी तुम रुको, ठीक है, at most k different ये सब रुको, मैं simple question पूछ रहा हूँ। If you have an array which is having some repetitive elements, array का size होता है that won't tell you, arr dot size won't tell you कि what is the number of distinct elements. But if you create a hash map out of it, and if you're telling what is the hash map का size, then you will definitely get the number of distinct elements. Agree करते हो कि नहीं करते हो guys? ठीक है, so this question is also a sliding window question. Sliding window but little different. ठीक है, I'll tell you what is different. ठीक है, so just wait. अब इस लॉजिक को एक बार सोचने की कोशिश करो कि how do you find at most k different values? एक बार सोचने की कोशिश करो, एक बार सोचो guys कि at most k different elements का कैसे करोगे? I'll give you 1 minute time कि using this particular property, how do you do it? हाँ, any updates? Find in values greater than k, k के साइज पे विंडो सर्च करेंगे? नहीं 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 मोहित, तो बहुत कंस्ट्रेंटली सोच रहे हो। ठीक है, तो इसमें दिस अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, we will be using see, we will be using 2 pointers. So 2 pointers in the sense कि you will be having 2 pointers I and j. ठीक है, एक बार सुनना ध्यान से, एक आइडिया सुनना। ठीक है, तो आई इंक्रीज द j वैल्यू, है ना, आई यहीं पे रहेगा, j एक बार इंक्रीज हुआ। सो हैश मैप का साइज क्या हुआ? 2 हो गया। वापस j को इंक्रीज किया, 2 ही रहा। वापस साइज को इंक्रीज किया, 3 हो गया। ओह, राइट। सो समझ लो आई नीड एट मोस्ट ओनली 2 वैल्यूज, k का वैल्यू 2 है, एट मोस्ट 2। तो देखो
if you choose this subarray, ठीक है, if you choose this subarray, don't you think bro, like चलो एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। तो यू विल बी यूजिंग 2 पॉइंटर्स। एक बार सुनना, लाइक समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार सुनो, एक बार आइडिया डाल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग, राइट? यू हैव 2 पॉइंटर्स, यू विल बी यूजिंग 2 पॉइंटर्स। एक को कांस्टेंट रखो अभी के लिए एंड इंक्रीज अदर गाय, ठीक है? दिस गाय आगे बढ़ी, नाउ द साइज इज 2, हैश मैप का साइज इज 2, राइट? सो हैश मैप का साइज इज 2 राइट नाउ, सो इट्स कूल, हैश मैप का साइज 2 है, देन इट्स कूल, करेक्ट? यही तो चाहिए मुझे। तो हाउ मेनी सबएरेज आर फॉर्मिंग गाइस? दिस इज, बताओ कितने सबएरेज फॉर्म हो रहे हैं इसमें? एट मोस्ट बोला ना, तो k equals to 1 is also considered, right? तो k equals to 1 में, like when j is here, even then answer में there should be one subarray, correct? Because this is a subarray which is having at most k different elements, right? Hash map का size 1 है, correct? Correct? So now answer का size 1 है, right? Now j is here and even this guy is falling under your condition. So how many are forming? Can you tell me how many are forming? This is one, this is the other one. Agreed, guys? मतलब देखो, like ये one corresponds to this particular one, right? And then like the moment you j is here, 1,2 is another subarray and 2 is another subarray. So this is forming two values. Agreed? है ना? अब चलो j को और बढ़ाते हैं। Even this guy is falling under your condition of hm dot size is less than at most k different elements, k distinct elements. This guy is also falling under the same condition. ठीक है? Now how many subarrays are there are forming, guys? ये एक सबएरे हो गया, ये एक सबएरे हो गया, ये एक सबएरे हो गया। एग्रीड? करेक्ट? 3 हो गया ना? तो देखो गाइस, एक चीज दिख रहा है कि तुम लोग को, मतलब j माइनस आई, अगर j वैलिड है तो j माइनस आई प्लस 1 नंबर ऑफ सबएरेज आर एडेड। ये चीज दिख रहा है क्या तुम लोग को? देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये ओके, यू आर जस्ट बेसिकली काउंटिंग द नंबर ऑफ इंटीजर्स, राइट? So these many number of subarrays are generated if I comma j are valid. Just think, क्या बोलते हैं, एक बार सोचो इसके बारे में। मतलब देखो मैं j को वेरी कर रहा हूँ and j is becoming valid. The moment it is getting valid, ठीक है, I'm just adding this thing into my answer because these many number of subarrays are being generated. See, this is another subarray, that is 2, only 2. 2 comma 2 is another subarray, right? 1 comma 2 comma 2 is another subarray. You can see that this is 3, correct? This is nothing but j minus I plus 1. This is nothing but j minus I plus 1. This is nothing but j minus I plus 1. क्यों? Correct or wrong? है ना? Correct, guys? कर पा रहे हो इसको? Yes या no बोलो? 1 is also subarray, correct? है ना? But 1 is already included. See, 1 is included, ना? So you will just include from this. You will just take these arrays which are new with this. You will just include the new element. ठीक है? तो चलो मान लिया सब सही चल रहा है, ठीक है? वैलिड जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इनवैलिड हो जाएगा तब क्या होगा बताओ? ठीक है, तो j is this one, okay, so this is also working cool. So now j will become here. यहाँ पे देखो hash map का size has become 3, correct? It is exceeding the k value, at most k different elements बोला, it is exceeding, correct?
No, k is not the size of hash map. Man, say k is a value that is given to us. Okay, you're supposed to find the number of subarrays which are having at most k different values. देखो j is here now. ठीक है, j is here. इसका मतलब है कि देखो now your hash map size has become 3, which is more than the k value, that is 2. Correct? तो फिर भाई फिर तो invalid हो गया है ना. So now I need to देखो hash map का size is became greater than k, है ना. तो I need to bring it down. इसको नीचे लेके आना होगा. Correct? इसको नीचे लेके आना होगा to make it valid. Correct? You're basically calculating the valid substrings, subarrays, right? तो मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा देखो इसको नीचे लेके आने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मूव j टू द बैक साइड और मूव i टू द राइट साइड. ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ या इसको पीछे हटाओ, तब भी तो कम होगा सब एरे का साइज. गाइस, डू यू एग्री? करेक्ट. सो आई डेफिनेटली वोंट चूज दिस ऑप्शन बिकॉज हम आगे बढ़ाए थे, इसीलिए मतलब इसीलिए ये अगर मैं वापस पीछे बढ़ा दूंगा, आई वोंट इवन एक्सप्लोर दीज एलिमेंट्स, राइट. आई नीड टू एक्सप्लोर दीज एलिमेंट्स बट right, but not at the cost of this. Correct? So what I'll do is I'll increase the I value. ठीक है, I का वैल्यू यहाँ रखूंगा मैं. अभी देखो I का वैल्यू यहाँ रखा, मतलब इसको मैं रिमूव कर दिया, इसको 0 कर दिया and I removed it. 0 होते हैं, remove it. Now what is the size of the hash map, guys? 2, right? 2k. बढ़िया. Right? Now again it is in the zone. So now again I do this thing. Now again I do j minus I plus 1. That is this particular array, and this particular array. Right? So what are these? 3, 2, 3. Right? 2, 2, 3. These are the subarrays that have been formed using j and I, which are valid. Correct? Guys, are you following this? Can you see how magical this is? How you're varying the size of the subarray in such a way that you're kind of generating all of them, right? Just see, you're generated now. So the moment it is valid, okay, I'm adding j minus I plus 1 into my answer to generate key. This is another 3, right? So it has become 1 plus 2 plus 3 plus 3 again. Right? Now again I'll increase the value of j to explore more, right? But since I now again this guy is again more than this, so I need to less this, मतलब I need to decrease the size hash map. तो मैं एक बार कम करूंगा कुछ नहीं होगा, एक और बार कम करूंगा तब भी कुछ होगा, right? Again 2 more values, this one and this one, 1,1 and 1,3. Correct? So this is the thing I'm writing, guys. एक बार सोचो के बारे में. This is the 2-pointer approach. You're moving to both the pointers like one pointer in such a way that you're extending your space search, and if it is valid at most k distinct elements, then you're adding all the subarrays in that, irrespective of what it is. Okay? But if it is not valid, you make it valid and then you add it. थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आई एग्री, ठीक है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. लॉल. एक बार सोचो इसके बारे में, लाइक आई थिंक काफी ज्यादा कम बच्चे हैं अभी, राइट, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. द नंबर ऑफ arrays that are generated are j minus I plus 1, right? And I'll make I and j valid. ठीक है, I'll make I and j valid. ठीक है, valid in the sense कि hash map का size is less than the k value, less than or equal to the k value. Every time it is less than or equal to the k value, I'll add j minus I plus 1 because it will generate all the subarrays, right? So there are, so Mohit, if you see that in that way, okay, there are multiple, okay,
you just take what, how many subarrays are there, you can say this one, this one, this one, this one, this one, this one, right? But we are not checking that. We are always checking ki if wherever J is, considering that as the last point, from there we are just checking this one and this one and this one. That way. Like if at all J is here and I is here, we're only checking these things. Because J must have to be here, J must have moved here, here, here as well. Correct? Samjha? So because J is previously here as well, at that time is also it is valid, right? So at that time these things are covered, right? These both are covered. The moment J was here, even at that position also it is valid. At that time this was covered. So in a way everything is getting covered, assuming J is the last element. Correct? Okay. Yeah, Neil. So like that's what I'm saying. When the actual topic sliding window jump sikayenge, then these things will be like you will be doing the similar kind of questions. But right now to understand the hashing property, okay, the sliding window is not anything out of the blue, it is the same thing, man. Like what I'm doing now, like increasing it, decreasing it, moving it. Simple technique. It's just an intuitive way. They just gave it a fancy name. Sliding window is concept. It's not a concept. It's just a way of doing the problems. The problems I will formalize it. So right now this is how we are doing. Okay. No worries. Depend. It's fine. Okay. लेकिन it's fine. ठीक है पहली बार है I understand मैं भी expect नहीं कर रहा तुम लोग को समझ में आए but this is the concept man like देखो you will include it inside the answer okay and then if at all the hash map size is under the k value okay I'll just add j minus I and I'll keep on like I'll do it again. The moment it is not equal then I'll increase the I value to decrease this particular subarray ka size so that okay, it will again come back hash map ka size will come back to k value and then again I'll add this thing. It's all about adjusting the subarray size and generating all the subarrays from that. पहली बार है understand ठीक है right. So tomorrow you guys will be having a test, right? So so Saturday like test देना properly contest देना revise all these things. And अच्छी तरह से देना guys ठीक है और Sunday को right we'll be having a discussion of that session ठीक है I won't skip that दोपहर में कभी 1 बजे के आसपास रखेंगे that concept ठीक है and we can do that ठीक है. Yeah, I'll be taking a class on Sunday, but that will be very specific to the doubts, like doubts you guys might be having in the test. Okay, in the contest. Okay. Okay. So all the best for that. Okay. Sunday timing I'm planning on 1 o'clock, man. What do you say? कुछ soft skills का class है तुम लोग का 11 to 12:30 तो 1 o'clock को plan कर रहा हूँ. ठीक है. तो या सुबह करना है क्या बताओ 9 to 11 करें 9 to 11 करें guys. नो बनाए मेरा क्रिकेट मैच है तो माय गॉड यार शाम में हम प्लानिंग लाइक कि शाम में थोड़ा चिल कर मतलब मैं भी चिल करूंगा थोड़ा संडे है ना तो लाइक दोपहर में कर सकते हैं 1 to 3 कर सकते हैं या 9 to 11 is good. चलो 9 to 11 let's see man I'll open a poll मैसेज ड्रॉप करता हूँ 9 to 11 चाहिए 9 to 11 तो I'm fine ठीक है but I think you guys have some class है ना तो let's see ठीक है so just see this thing guys this question ठीक है I can give you the code do you want me so I can code it down the smaller function of it shall I do it guys एक बार code करूँ
like this particular question card, I'll write a pseudocode of it. Okay. ठीक है, चलो I को 0 रखा, J को भी 0 रखा, ठीक है. While J is less than N, ठीक है, तब तक तुम आगे बढ़ाते जाओगे. MP dot push put A of J, MP dot get A of J, get और default है, ठीक है. You're increasing the frequency. Are you able to see this, guys? Frequency increase कर रहा हूँ मैं. Correct? Frequency increase कर रहा हूँ मैं, right? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि while, ठीक है, frequency increase कर रहा हूँ, ठीक है. So if at all, like let me write a while loop. While MP dot size is greater than K, मतलब अगर increase करने के बाद size K से ज्यादा हो गया, इसका मतलब भाई गलत होगा, है ना. तो हमको I को भी increase करना है, राइट. तो I को तब तक करेंगे जब तक ये greater than K होगा, करेक्ट. तुमने देखा at times it's not just one time you'll move it till it is equal to or less than K, correct. So I'll just write something like MP dot put A of I, MP dot get A of I minus 1, right. तो अगर if MP dot get, अगर ये 0 हो गया, ठीक है, अगर if at all it becomes 0, I need to remove it as well. तभी तो साइज में फर्क दिखेगा ना. रिमूव कर दिया, then I'll do I plus plus, because this thing I need to repeat it till it is greater than K, right. So I'll remove the first element and I'm checking if it is 0, maybe it could be 0, right. If it is 0, I'm removing it and again I'm going for the next value. So अगर ये अभी भी greater than K है, again I'll do it. So at the moment when it is less than or equal to K, you are here, right. So यहाँ पे I'll just add it to the answer. बस हो गया. J minus I plus 1 and do J plus plus. This is the code. It might be helpful. It will be definitely helpful. ठीक है, एक बार सोचो इसके बारे में कि जो मैंने बताया था वही कर रहा हूँ कि नहीं. देखो, न्यू एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, राइट, इनटू द मैप, राइट. अगर if it is exceeding the K size, then फर्स्ट एलिमेंट को निकाल रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, एंड अगर 0 हो गया तो रिमूव ही कर दे रहा हूँ क्योंकि साइज मैटर्स, राइट. सो अगेन I प्लस प्लस कर रहा हूँ, अगेन आई एम चेकिंग कि जब तक वो ग्रेटर देन K होगा तब तक मैं करता ही रहूंगा, राइट. द मोमेंट इफ MP dot size is less than or equal to K, right, then the moment this thing happens, I'll be just doing J minus I plus. बस हो गया, आंसर को भी 0 इनिशियलाइज करना स्टार्टिंग. दिस इज द कोड. यू नीड टू थिंक, ठीक है, थोड़ा थिंक करने वाली चीज है, ये समझाने वाली चीज नहीं है, ठीक है. ताकि आप एक्सप्लेन है ना, ठीक है. एक बार सोचो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n, करेक्ट दिनेश, करेक्ट. It won't be big of n square because they are working independently and each value can go up to n only, correct. They are not nested loops. It is big of n, okay. 2 pointers, they are not working dependently, ठीक है. तो ये बनना है तो पूरा ही क्लास करा, that's not in that way, ना. If we directly remove that element, then that is a wrong thing, na. If you why should you directly remove it? For example, यहाँ पे देखो, I was here, ठीक है, and you can see that if you directly remove it, ठीक है, I will be here, still 2 is there, still the distinct number of elements are 3, right. So that is wrong. You should be decreasing the frequency. If the frequency is 0, then only you'll remove it, because you don't want frequency to be 0 of any element, correct. ठीक है guys, we'll discuss this, no worries, ठीक है. Sunday को discuss करेंगे. Good night for now. ठीक है, I'll send all these things in the chat and all this. Good night.
रेज हैंड करो यार अगर हेलो। हाँ bro, हाँ, जो आपने अभी बताया था, मैंने पूछा था कि अगर हम डायरेक्टली डिलीट करेंगे, तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर उसका साइज बड़ा होगा, हैश मैप का साइज जो है वो अगर के की वैल्यू से बड़ा होगा तो हम डायरेक्टली रिमूव कर दें। मैं ये पूछ रहा था। directly remove करें so directly remove it is that like is that giving you the exact size of the subarray which is having the distinct elements as less than k my question to you if you directly remove it जैसे मैं एग्जांपल दिया था उसमें दो टू है ना तो दो बार मूव करना पड़ा आई को टू को पूरा निकालने के लिए रिमूव करने के लिए है ना बट इफ आई डायरेक्टली रिमूव इट आफ्टर वन स्टेप ओनली ठीक है सो विल दैट प्लेस माय आई टू द करेक्ट पोजीशन जहां मेरा सबएरेज बनेंगे सोचो एक बार ओके ओके ओके, गॉट इट। है ना तो अगर आई करेक्ट पोजीशन पे होगा तभी तो नंबर ऑफ सबएरेज प्रॉपर्ली कर पाएंगे ना ब्रो या गॉट इट। है ना तो वही है गाइस ठीक है सो सेंड ऑल दिस थिंग्स नो वरीज good night for today okay? So I will discuss in the next class regarding the prefix sum. Yeah, I'll let you know the Sunday's timings okay sure not a big deal hashtag बता दूंगा हेलो। हाँ हाय बताओ ये सर मैंने सर एक पोर्टल का सर क्वेश्चन किया था पेयर सम डिविजिबल बाय के। ओके सर उसमें मेरा सर 3 टेस्ट केस फेल आ रहा है सर, देख लेंगे क्या व्हाट इज द उसमें। लॉजिक क्या लिखा था तुमने सर लॉजिक मैंने ये लिखा था सर कि अगर कोई रिमाइंडर लेट सपोज दैट उसने के जो नंबर दिया है और चेक करना है पेयर को सम करके कि वो फुल्ली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हाँ देन वी चेक फॉर एवरी नंबर द रिमाइंडर इफ वी सम द टू। सर रिमाइंडर हमने एक हैश मैप बनाया है रिमाइंडर का हर एक नंबर के साथ। अगर सर रिमाइंडर लेट सपोज दैट इफ x is remainder then k minus x is present in the map then this करेक्ट सही सोच रहे हो हाँ आगे बताओ यस सर। तो बट सर वो लॉजिक मैंने लगाया बस सर 3 टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। हाँ तो मेरे हिसाब से तुम क्या नेगेटिव नंबर्स के लिए सही से प्रोसेस कर रहे हो सर उसमें कांस्टेंट में नेगेटिव नंबर नहीं दिया सर, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ये बात बताओ -1 मॉड्यूलो 4 का आंसर क्या होना चाहिए सर माइनस में ही जाएगा वो। माइनस में नहीं रहेगा -1 मॉड्यूलो 4 है अगर माइनस है यू शुड बी एडिंग 4 टू इट जिससे 3 होगा 3 मॉड्यूलो 4 दैट इज 3 ओके सर। तो ये एक बार करके देखना शायद कांस्टेंट्स में नहीं दिया मे बी बट ये होगा तुमने सही सोचा लॉजिक तो सही है लॉजिक कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट ये होता है ना ब्रो कि कोई तुझे बता देगा लाइक तुम उस केस के लिए बच जाओगे लेकिन तुमको खुद से डिबग करना सीखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं बताने वाला उस टाइम पे बहुत कम टाइम में तुम्हें खुद से करना पड़ेगा ठीक है यस तो लॉजिक तुम्हारा सही है ठीक है तुम कोशिश करो कि ठीक है बस अगर नहीं हुआ ठीक तुमसे तो वो एज केसेस देख लेना टेस्ट केस देख लो थोड़ा पॉइंट चलेगा कोई दिक्कत नहीं टेस्ट केसेस ओके देख सर। लेना और देख के एक बार ट्राई रन कर लेना कि किसमें प्रॉब्लम है तुमने नेगेटिव नंबर्स ही है और तुम उसको डिफाइन किया या क्या है ठीक है तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि लाइक डिबग कैसे करते हैं इस बार के लिए देख लो लेकिन एग्जाम में तो नहीं दे सकते थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा ठीक है ओके सर। और सर जो सर अभी आपने सर क्वेश्चन डिस्कस किया था सर, इसमें सर जो आपने सर आंसर में प्लस कर रहा था सर, आपने जे माइनस आई प्लस 1 हाँ सर, उसके जगह सर हम एक काउंट वेरिएबल नहीं ले सकते हैं क्या? जब जब हाँ हम सर जे को बढ़ाएंगे या फिर आई को माइनस करेंगे तब तक हाँ हम काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे। हाँ मतलब काउंट क्या लेंथ है ना काउंट मतलब यस सर, काउंट हाँ लेंथ ही है। लेंथ ही है ना लेंथ को यूज कर लो काउंट माइनस माइनस करो तो एक और वेरिएबल ज्यादा हो गया बस नहीं सर, वो सर मैं नहीं कर रहा सर। सर काउंट को जैसे सर हमने जे इंक्रीज करते जा रहे हैं ना सर, मैप का साइज हमने जैसे सर के सर लेंथ दिया है, के से बड़ा नहीं होना चाहिए हाँ के डिस्टिंक्ट नंबर से। तो सर हम हाँ हमेशा मैप का साइज चेक कर रहे हैं कि वो के से बड़ा जब भी होगा तब हम रॉन्ग जा रहे हैं। हाँ
तो सर जब जब हम जे को बढ़ा रहे हैं अपने राइट डायरेक्शन में, तब हम काउंट को सर इंक्रीज कर सकते हैं ना? हाँ, काउंट इंक्रीज कर लो, आई को जो पढ़ा हुआ काउंट को डिक्रीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और सर फिर उसके बाद सर जब हम अपने नंबर को हटा रहे हैं सर, लाइक सर आई को इंक्रीज कर रहे हैं जब, हाँ। तब हम काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो सर वो तो हाँ। सेम ही आंसर देगा। काउंट को सब्ट्रैक्ट करो। ओके काउंट सर। को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है यार। देखो ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, दैट यू कैन यूज टू पॉइंटर्स एंड ऑल दैट, यू कैन यूज अ वेरिएबल टू नो द साइज, ठीक है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ठीक है। लेकिन लॉजिक like algorithm is not very implementation specific or language specific. Should be something where solution specific algorithm. Okay? तो जिस तरह से भी करो तुम एक और वेरिएबल डाल देना, फाइन। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ ब्रो, कर सकता है सर, चलो ना, गुड नाइट।